respected President RTCA Sri Satish Gupta ji, Vice President Udaipur Tax Bar Association Sudhir Mehta ji, Pankaj Jain Sahab, and today's learned speaker Sri Rakesh Gupta ji, Dr. Rakesh Gupta ji, and Somil ji. And today's the speaker of the evening session, Yashasvi Sharma ji. My secretary of this TCA, Sri GC Jain Sahab, and Secretary Vinay Joli ji, Secretary RTCA. I would like to welcome to all of you on behalf of the Tax Consultant Association. Especially my welcome to Dr. Rakesh Gupta ji. As you know that Rakesh Gupta ji is a pioneer speaker, pioneer personality of the subject. And to listen to Sri Rakesh ji is a really a matter of pride, and it is a matter of pleasure that he is with us. I heartily welcome Sri Rakesh ji on behalf of the Tax Consultant Association. I too welcome to Sri Somil ji that he has given the consent to be here virtually on the direct taxes subject. And definitely the Yashasvi Sharma ji is a local from Jaipur and he is a very expert in the indirect taxes. I welcome to Sri Yashasvi ji that he has kindly consented to give a lecture on this recently announced the budget, which is mainly on the amnesty scheme. Friends, the budget which came in the month of February on direct taxes, it was a very important budget. As you all know that although the finance minister has spoken very less about this budget in the budget speech, but we find when we get the fine printout of this budget or the soft copy of the budget, then it was more than 80 pages amendment is there, and a lot of amendments which need the thorough discussion, and therefore we decided that time that we have to organize the multiple session to understand the budget, the provisions there are in the union budget relating to the direct taxes. So although we have already organized one seminar on the next day of the budget, but today because we wanted to get the expert opinion of the Rakesh ji and expert comments of the Rakesh ji. So definitely Rakesh ji and Sonal ji will enlighten us about the provisions which are there in the budget and lot of other provisions, what the impact is there of the budget to the profession. So that all things we will listen. I will not take much time, and thank you, and over to Sri Tarun ji. Thank you so much Natwar ji for the warm welcome address. जैसा कि आपने बोला सर, हाँ बजट में मैम ने the madam finance minister madam has spoken very less, but जो fine print हमने बाद में देखा और जो उसमें amendments थे, that was a pretty lengthy one. तो बस आज सर का सबसे बड़ा ध्येय इस सेमिनार का भी है कि सर जो फाइन प्रिंट्स थे अमेंडमेंट्स के, कैसे ये अफेक्ट करते हैं टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव से, एक प्रोफेशनल की सोच के पर्सपेक्टिव से, उसी को सभी की ओर लेके जाएं. और ये सब एफर्ट्स, ये सब हम लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए यूटीसी, उदयपुर टैक्स बार एसोसिएशन, टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन जयपुर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सब पार्टिसिपेंट्स का, सभी लोगों का. और हमारे मेंटोर श्री सतीश जी गुप्ता सर, प्रेसिडेंट आरटीसीए का सर. तो इसी के साथ मैं सतीश जी गुप्ता सर जो प्रेसिडेंट आरटीसीए हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं फॉर हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू एनलाइटन अस व्हाट हैज चेंज्ड आफ्टर बजट इन ए शॉर्ट, और सब पार्टिसिपेंट्स के लिए आपके मूल मंत्र. थैंक यू तरुण सर. थैंक्स अ लॉट. First of all, you are now host, and Somil wants sharing of his PPT, to kindly make it possible for him. So you are now host of the entire program. So thank you very much for inviting me on this to address my presidential address. So, but I would like to minimize it because it is already 4:12, and we want to hear Honorable Dr. Rakesh Gupta ji, Somil Agarwal, and I think time is theirs, and all of us wants to hear them. But I would like to say simply few words that Rajasthan Tax Consultant Association is a premier body of tax consultants of Rajasthan,
It includes chartered accountants, tax advocates, and tax practitioners. I am thankful to Udaipur Tax Bar Association, their president, managing committee, and members for joining hands with us in this very important program on the union budget and the state budget. And friends, you will be happy to know that our speakers of the day, Honorable Dr. Rakesh Gupta ji and Somil Agarwal, who are well known and very renowned tax experts of the country, and they have not only knowledge of direct tax, but they are the experts of the all sectors. Like if you talk about the PMLA, if you are talk about the FEMA, if you talk about the indirect taxes, they are really experts, and it will be our pleasure and a moment of knowledge for all of us to listen them. So I would not like to take much of time of the audience today, and I don't want to come in between us and them. I would request Tarun to invite Honorable Dr. Rakesh Gupta ji, but please introduce him also for the benefit of our members. Thank you very much. Thanks, Tarun. Thank you so much, sir. Your kind words and golden words are always add some value in the professions. Thank you so much, Satish sir. तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नमस्कार फिर से आप सभी को, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, दिल्ली से हैं। वैसे राकेश गुप्ता जी सर खुद किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं टू प्रोवाइड अ ब्रीफ अबाउट द राकेश गुप्ता सर, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि राकेश गुप्ता सर जी he has a merit holder in both high schools and intermediate also. He is graduated from St. John's College, Agra in 1980 and has been ranked first at that time itself on the university level. Sir is an FCA, FCS, AICWA, MBA, LLB, and in that also sir has secured first rank in the university again. He is an LLM and PhD. He is appointed member of ITET at the age of just 37 years. Posted at Hyderabad, and then to pursue his opportunity, he has resigned from that. Post that, sir has co-authored also a book along with the partner Raj Agarwal, 2 books for the leading publisher Taxman. The title of the books were Search and Seizures and Assessment of Search Cases, along with Taxation of Real Estate Developers and JDA. So the author, he is a fantastic author and written on varied subjects also. So currently he's practicing as an advocate and he's appearing in ITAT, High Courts and Supreme Courts of India. He has also argued for some of the very, very high profile cases at the tribunal and high court level, which has drawn a much of the media coverage. He has also participated in United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, which has held at United Nations headquarters in New York in April 17 and April 2019. He is also a member of International Association of Tax Judges and participated in the meetings which has been held on Helsinki and Cambridge. So he is also invited member of Chamber of Commerce and Industry on Finance Bill in Abu Dhabi and Bahrain. So friends, we all know what a versatile personality and what a versatile speaker we have today in front of us. So sir, we all are yours, your listener for this hour. So I just invite Dr. Rakesh Gupta sir, please enlighten us with the latest happenings and latest amendments in the union budget. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Tarun. Very esteemed members of 3 prestigious associations: Rajasthan Tax Consultants Association, Udaipur Tax Bar Association, Tax Consultants Association, Jaipur. I and Somil both are elated to be with all of you. So the scheme of today's presentations, which I have thought, is that the Somil will start first, and he will take about 25 minutes or so, and then I'll pick up the threads, and then I'll go deeper into the various facets of these provisions of the Finance Bill 2022. So you can introduce Somil also. Sure, sir. And the Somil. Yes, sir. Please introduce Somil also. Yes, sir. Okay. So we, dear friends, another speaker also for the day, CA Somil Agarwal sir, is also with us today. So just to brief everyone about the Somil Agarwal sir also, he is a partner in ARA Legal and he's heading tax and economic law advising over there. He's an ACA,
ACS, ACMA, DISA, LLB, and LLM. He's a lawyer by profession and a qualified chartered accountant. As I told, he's a partner in RRA Legal, heading the tax and economic law advisors, and he actively handles the direct tax litigations and advisory of the firm. He regularly appears before various benches of IT, High Courts, and Supreme Court of India, and have argued several cases and published various articles in leading tax journals. He is also regularly invited by various chambers and study circles to provide his thoughts on the latest happening in the direct tax world. So with this, we warmly welcome CA Somil Agarwal sir to share your brilliant thoughts with us that how we should see the Union Budget 2022. Over to you, Somil sir. Ikbar sir, Somil sir, maybe you can check. I have given you the rights for screen sharing also. Yes, sir. That has been enabled, sir. Thank That you. is Thank you, enabled. sir. Thank you. Should I begin, sir? Yes, sir. We Yes, all sir, are waiting just Sure. to hear you, sir. Thank you. Thank you so much, Tarun sir, Satish Gupta sir, Sudhir Mehta sir, my guru Rakesh sir, and seniors in the profession, and very dear friends. Budget 2022, as it was stated in the opening remarks, the speech was quite short, but the nitty-gritties, the fine print had a very long story to tell regarding the various amendments and changes which have been made in the provision. The first provision which I'll take up is section 14 capital A. Now section 14 capital A provision wherein we have been dealing with disallowances with respect to the exempt incomes. So are you not showing on a screen, Somil? Sir, I'll just put it on screen. I'll just put it on Okay. screen. Yes. Is it visible now? Yes, sir. Yes, Somil sir. Your screen is Yes. visible. Yes. So I have just brought the provision also in front from the finance bill for the comfort and the ease of everyone. So section 14 capital A, an explanation has been added to the provision. And this explanation basically, to my mind, is to overrule the decisions which were held that in the absence of dividend income, in the absence of exempt income, there would not be any disallowance under 14 capital A. There is a long litigation which has been going on. Although CBDT brought circular that as their intent is that income may have been there, exempt income may not have been there, still 14A disallowance as per Rule 8D has to be calculated. However, Honorable High Court have consistently held that in the absence of exempt income, there is no case of disallowance under section 14 capital A. Now this explanation, though, has been brought from 1st April 22, but the way it is worded, that for the removal of doubts, it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in this act, the provision of this section shall apply and shall be deemed to have always applied. In a case where the income not forming part of total income under this act has not accrued or arisen or has not been received during the previous year, relevant to an assessment year, expenditure has been incurred during the said previous year in relation to such income not forming part of total income. So even if there is no exempt income, disallowance under section 14 capital A read with Rule 8D can be made. So sir, three propositions which were earlier there. One, that is, if there is no exempt income, there is no question of disallowance under 14 capital A. The second proposition was that the disallowance which is computed under Rule 8D is to be limited to the extent of the exempt income. Say, for example, Rule 8D computes disallowance of about 8 lakh, 10 lakh rupees. However, the income is about 50,000, 70,000 rupees. In that case, Honorable Delhi High Court in joint investment and number of decisions have held that the disallowance shall be limited to the exempt income. The third aspect that was there was Honorable Delhi High Court in ACB India, which had held that only those investments for the purpose of calculating the average value of investment, which is used in the formula as per Rule 8D, only those investments will be considered wherein actually income has been earned. So in view of this explanation, this clarification, though it has been made effective from 1st April 22,
All these propositions, to my mind, will not be available any further. There another controversy which I find, and which we have been dealing with respect to the amendment which was brought last year in respect of ESIPF, wherein explanation was added to 43B as well as 3615A, again deemed to have been applied for the removal of doubt. That was brought. It is hereby clarified. The opinion is divided, though majority of cases are coming from the Honorable Tribunal, that the amendment is prospective. However, there have been decisions that they have held that the amendment is clarificatory, it is for removal of doubts, and accordingly will apply retrospectively. So this dispute may arise that whether this amendment would be applicable for the years earlier also, or even though the memorandum specifically says effective from 1st April 22. And this very aspect of memorandum saying 1st April 21 in that last year's amendment has been read by Honorable Tribunal to say that the amendment is prospective. So we hope that even in this case, the amendment is accordingly held as prospective. Sir, the second issue, second provision that I would discuss is section 40 small a clause 2. Yes. So the issue arose whether cess, education cess, would be allowable as deduction. There have been decisions, Honorable Bombay High Court and CISA Limited, and many more decisions from Honorable Tribunal, though on both sides, some holding yes, it is allowable, others against that not allowable as deduction. So on this line, to make it clear, and the intent of this amendment is that the amount of education cess or surcharge or such amounts by whatever name called were never intended to be allowed as deduction, and accordingly in section 40 amendment has been brought by which explanation 3 has been added, which has been added with effect from 1st April 5. Yes. So with effect from 1st April 2005, it has been added, and it says that surcharge, cess, or any such amount, whatever name called, shall form part of the definition of tax, term tax, and accordingly in section 40, the amount shall not be allowable as deduction. The third aspect, the third issue, the provision which I would take is section 68. Sir, section 68. Tarun sir, एक बार please देखेंगे. अब हो गया. Yes. In section 68. Now, any sum found credited in the books of accounts. इसके लिए nature and source was required to be explained, so that to the satisfaction of the assessing officer, so that no addition is made. Now in 2012, sir, one proviso was added. That proviso with respect to share application, share premium, and share capital, wherein the nature and source of the person in whose name the credit was appearing, that is the person from whom share application money has been received or share capital has been invested by the person. Now the source, nature and source of that person was also required to be explained. So that amendment was brought in 2012 with respect to the share capital application as well as share premium. Same lines where, sir, amendment has been brought in respect of loan or borrowing or any such amount by whatever name called, that in addition to source, which is explained by the assessee, now the source of the source will have to be explained in respect of loan or borrowing. So जो चीज हमसे डील करते आ रहे हैं with respect to share capital, share application, after that first amendment, that source of source is to be explained. The same concept parameter will apply to loan or borrowing. अब एक सवाल उठता है कि सर ये जो phrase है or any such amount by whatever name called, to what extent is it generic? To what extent can it cover? What all amounts can it cover? So in my humble submission, since the word loan or borrowing which come before this, the concept of adjustment generis to my mind will apply, and this will take color from these very words
So effectively, the amounts which are in the nature of loan or borrowing only will be covered by this proviso in my humble submission. तो सर अब लोन और बोरोइंग के लिए भी सोर्स, नेचर एंड सोर्स ऑफ द असेसी as well as nature and source of the lender will also be required to be explained, and same the ITR, the confirmation, the balance sheet, the source from where the funds were received by the lender to make the fund, to lend the funds to the assessee. This all has to be properly explained, and accordingly section 68, the onus on the assessee will accordingly be taken to have been discharged. This amendment is effective from 1st April 2023. So the next provision that I'll take is section 194IA. Now 194IA provides for TDS to be deducted in case of transfer of immovable property at the rate of 1% of the consideration. That was the law till now. अब जो सर अमेंडमेंट करी है वो ये है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को भी इसमें ऐड कर दिया गया है. So 1% of consideration of transfer or stamp duty value whichever is higher, उस पे हमें TDS काटना होगा 1% और जमा करना होगा. सिमिलरली जो इसका सबसेक्शन 2 है सर 194IA का सबसेक्शन 2, जो ये कहता था कि जो 50 लाख की लिमिट हम देखते थे कि TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें सिर्फ कंसिडरेशन थी. अब रिक्वायरमेंट ये है कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोथ शुड बी बिलो 50 लाख, देन TDS provisions will not apply. Accordingly 194IA में जो अमेंडमेंट है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर किया गया है, ऐड किया गया है. सर the purpose which comes out from the memorandum is to remove the inconsistency of what? 194IA vis-a-vis 43CA and 50C. A 43CA for the purpose of PGBP and 50C capital gains, जहां स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंसिडरेशन कम है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रिप्लेस हो जाती है एज कंसिडरेशन, लेकिन 194IA में इसको फैक्टर इन नहीं किया हुआ था. तो प्रोबेबली उस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए इन्होंने अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को 194IA में इनकॉर्पोरेट किया. बट द क्वेश्चन दैट अराइजेस एंड द क्वेश्चन व्हिच आई विल पोज टू राकेश सर एंड रिक्वेस्ट हिम टू डील इट व्हेन ही गोज इनटू द कंट्रोवर्सीज, दैट वेदर द इनकंसिस्टेंसी एज टू व्हाट हैज बीन सेड being removed by way of adding the stamp duty value in 194IA has been actually removed in light of there being a proviso with respect to the agreements and payment being made by check, and in light of the safe harbor limit of 10% available. So I'll request sir to take up that issue when he takes up his deliberation. The next provision, sir, section 263. Now section 263, a provision which provides for the revisionary powers that are available with CIT. The CIT, if he finds that the order of the assessing officer is erroneous or prejudicial to the interest of the revenue, then he can obviously revise, modify, cancel, annul or set aside the assessment order. So transfer pricing orders जो थे वो they were not subjected to 263, and accordingly the amendment in 263 is with respect to that transfer pricing officer के जो orders हैं, those have also been again made subjected to 263. So CIT can, if he finds that the order is erroneous and prejudicial to the interest of the revenue, then he can pass an order modifying, enhancing, cancelling or directing a fresh transfer pricing study order to be made, and accordingly that power has been given now under section 263. So section 272 capital A. Now 272 capital a whole list of penalty provisions that is available under subsection 2 of 272A, जहाँ सर TDS statements को delay file किया, multiple variations के clause A से लेके M तक अलग अलग penalty के provisions हैं, for which penalty was prescribed 100 rupees per day. Now that 100 rupees per day has been amended and it has been provided as 500 rupees per day for each day of failure. Sir, memorandum
से जो पर्पस, जो इंटेंट दिखाई दे रहा है वो ये है कि दिस प्रोविजन, दिस लिमिट वाज पुट इन द ईयर 1999 and as per the legislature, their experience, now 100 rupees per day is not acting as an effective deterrent for the purpose of ensuring proper compliances. So they have in their wisdom decided to increase the level of penalty, and accordingly it has been now enhanced to 500 rupees per day till the time the failure continues. So the next provision which I'll take is section 144 capital B. Now 144 capital B, this provision was introduced with effect from 1st April 21, the complete regime of faceless assessment. सर अगस्त 2020 में फेसलेस असेसमेंट को 143 3A 3B में जो पावर ली गई थी उसके तहत लाया गया। फिर कपल ऑफ टाइम्स उसको और अमेंड किया गया बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन जो इंट्रोड्यूस किए गए थे। एंड देन टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट, द टोला एक्ट, बाय दैट 1 अप्रैल 21 से 144B को इंट्रोड्यूस किया गया। Now 144B was a complete code in itself in providing the procedure for assessment to be carried out in a faceless manner. Again, by this finance bill 2022, subsection 1 to subsection A of 144B have been substituted. Effectively, substantially, sir, same hai. But there are 4 or 5 important aspects which have been, and which I will say is a process of streamlining the process of assessment. जो भी उनके experiences रहे, जो भी hurdles आए जिसकी वजह से litigations हुई, उसको और streamline करने के process में 144B को subsection 1 to 8 को वापस reintroduce किया गया है। एक सर पहला जो सबसेक्शन 1 में सेक्शन 147 को ऐड किया गया। रीअसेसमेंट पहले भी कवर था, लेकिन उसमें जो एस्पेक्ट किए गए थे, जो यूज किया गया था, वो इस तरह था कि 148 का नोटिस और उसके बाद अगर रिटर्न भरी गई है तो उसके बाद 143(2) का जो ज्यूरिसडिक्शनल नोटिस है, ये तो ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ही इशू करेगा, और उसके बाद असेसमेंट प्रोसीजर फेसलेस असेसमेंट को NFAC को मिल जाएगा। Then it will be carried out by the NFAC. लेकिन अब 147 को जो है ऐड किया है, और जो नीचे प्रोविजंस थे, अलग अलग सिनेरियोज थे, तो 3 सिनेरियोज थे। एक तो मैंने बताया 148 वाला, एक है कि अगर रिटर्न नहीं फर्निश कर रखी है तो 142(1) नोटिस इशू किया असेसिंग ऑफिसर ने, ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने, और उसके बाद रिटर्न भरी है, या 139(1) में रिटर्न भरी हुई है उसके बाद, तो 143(2) वो सारे NFAC इशू करता था। सेकेंडली, अगर रिटर्न ही नहीं भरी है और 142(1) इशू किया है फिर भी नहीं भरी है, तो उसके बाद NFAC के पास इंटीमेशन के बाद मैटर असेसमेंट के लिए पहुंच जाता था। थर्ड, जहां 148 का नोटिस इशू किया है और रिटर्न नहीं भरी है, तो वो इंटीमेशन जाएगी और NFAC विल टेक ओवर द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। ये जो सारा कंफ्यूजन था, अलग अलग सिनेरियोज थे, इसको हटा दिया गया है, और अब फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट अंडर 143(3), 144 or 147, all have been included now. Assessment will be made by NFAC, और 143(2) नोटिस NFAC ही इशू करेगा। तो अब जो चीज बची है सर, वो ये है कि 148 का नोटिस एंड 148 कैपिटल A का जो प्रोसीडिंग करनी है, कि पहले शो कॉज देना है, फिर ऑब्जेक्शन SSC के आएंगे, एंड अकॉर्डिंगली दैट विल हैव टू बी डिस्पोज्ड, एंड देन 148 नोटिस विल बी इशूड। ये प्रोसेस अब अभी भी ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ही करेगा। उसके बाद द प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट विल बी कंडक्टेड बाय द NFAC। दैट इज द फर्स्ट स्ट्रीमलाइनिंग दैट हैज बीन डन बाय नाउ। सेकेंडली सर, एक जो काफी कंसर्न था, पर्सनल हियरिंग। नंबर ऑफ concerns were raised, decisions came out from Honorable Delhi High Court, various judgments of the High Court around the country, that personal hearing, once asked, will have to be given.
एंड अकॉर्डिंगली सर 144B में जो अमेंडमेंट की है, जहां प्रोविजन है पर्सनल हियरिंग का, नाउ द वर्ड यूज दिस शैल. Accordingly, once the assessee makes a request that yes, I need personal hearing to explain my case, then the NFAC will have to give personal hearing, and accordingly, where the request for personal hearing has been received, the income tax authority of the relevant unit shall allow such hearing. पहले था may allow, subject to the discretion, subject to the allowance, approvals, वो सब has been given away, and accordingly once it has been asked for, एक बार request place हो गई, then the income tax authority will have to give personal hearing. सर एक चीज जो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी है स्कीम में, वो ये तक स्कीम में प्रोवाइड किया गया कि अगर किसी वजह से कहीं फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है पर्सनल हियरिंग के लिए, तो एनएफएसी या वहां का असेसमेंट यूनिट विल इंश्योर कि दे ब्रिंग आउट, दे गिव द प्रॉपर फैसिलिटी सो दैट ये अपॉर्चुनिटी किसी के एंड पे भी मिस नहीं होनी चाहिए. सर थर्ड एस्पेक्ट व्हिच आई वांट टू हाईलाइट इज दैट जब ओरिजिनली फेसलेस असेसमेंट की जो नोटिफिकेशंस 143, 3A, 3B में आए थे, तब स्कीम के अंदर एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट था. दैट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जब असेसमेंट यूनिट बना लेगा तो वो असेसी को भेजेगा और असेसी के फिर ऑब्जेक्शंस लेके अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास किया जाएगा. सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट्स हुए. 144B में वेरिएशन ये आ गया कि ड्राफ्ट ऑर्डर भेजने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ शो कॉज नोटिस विच शोज कि क्या वेरिएशन प्रपोज कर रहे हैं वो असेसी को बताना जरूरी है. इस कंफ्यूजन से, मल्टीपल चेंजेस से प्रोबेबली कई बार ये हुआ कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू ही नहीं किया, सीधा ऑर्डर इशू कर दिया, या ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू किया, 1 या 2 दिन का टाइम दिया और बहुत कम टाइम के बाद ऑर्डर पास कर दिया, या टाइम दिया और टाइम से पहले ही ऑर्डर पास कर दिया. नंबर ऑफ सिचुएशंस हैव बीन taken up before the Honorable Delhi High Court and various high courts, wherein it has been held that this way or this action of not adhering with the scheme of 144B and as well as passing the order in complete violation of principles of natural justice, then the order has to be quashed or set aside, and accordingly numerous orders have been set aside. तो सर उसको और क्लैरिफाई क्लियर करते हुए अब टर्म जो यूज किया गया वो ये है कि प्रिपेयर एन इनकम और लॉस डिटर्मिनेशन प्रपोजल. तो सर टर्म नया है, कॉन्सेप्ट वही है कि असेसिंग ऑफिसर को जो भी वो वेरिएशन, जो भी एडिशन, डिसअलाउंस प्रपोज कर रहा है, दैट प्रपोजल हैज टू बी गिवन टू द असेसी, प्रॉपर एडिक्वेट टाइम हैज टू बी गिवन, एंड अकॉर्डिंगली वंस रिप्लाई इज sought, accordingly he can frame the assessment order. देन सर पहले जो रिजीम थी उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि असेसमेंट यूनिट जब अपना ऑर्डर बना लेगा, वो ड्राफ्ट ऑर्डर या अब जो ये इनकम डिटर्मिनेशन प्रपोजल है इसके बेसिस पे ड्राफ्ट ऑर्डर एनएफएसी को भेजेगा. एनएफएसी अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये डिसाइड कर सकता है कि क्या उसको रिव्यू यूनिट को भेजना है, और अगर रिव्यू यूनिट को वो भेजता था तो अगर रिव्यू यूनिट ने कोई सजेशंस, कोई इंप्रूवमेंट्स बता दिए, तो पुरानी रिजीम में ये प्रावधान था कि रिव्यू यूनिट के जो कमेंट्स हैं और जो ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑर्डर है जो बनाया गया है, इन दोनों को एक थर्ड असेसमेंट यूनिट, यानी कि वो यूनिट जिसने असेसमेंट ऑर्डर अभी पहले वाला नहीं बनाया, किसी और यूनिट को भेज दिया जाएगा और वो फिर फाइनल ऑर्डर बना देंगे. तो इसमें प्रोबेबली बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि एक बना रहा है, दूसरे को भेज रहा है, तीसरा उसको रिव्यू कर रहा है दोबारा और फिर वापस ऑर्डर पास हो रहा है. तो उसको हटा के अब जो किया गया है वो ये है सर, असेसमेंट यूनिट अपना ऑर्डर बनाएगा, रिव्यू यूनिट को भेजा जाएगा, रिव्यू यूनिट उस पर अपने मॉडिफिकेशन या अपनी जो कमेंट्स हैं वो एनएफएसी को भेजेगा, एनएफएसी वापस उसी यूनिट को जिसने ऑर्डर बनाया था उसको वो कमेंट्स जो प्रपोज किए गए हैं अलॉन्ग विद ऑर्डर उनको भेज देंगे. नाउ दैट यूनिट हैज द डिस्क्रिशन, ऑब्वियसली a judicial discretion based on reason to be recorded in writing, that whether it accepts or rejects the modification proposal made by the review unit, and accordingly after recording reasons of rejection, then they can accordingly prepare the order which would be then passed by the assessing officer. Sir last thing जो 144B में है वो ये है कि सबसेक्शन 9
जिसका कि अभी मैंने जिक्र किया, कई हाई कोर्ट्स ने इसका संज्ञान लेते हुए 144B सबसेक्शन 9 का जो ये प्रोवाइड करता था कि अगर कोई भी असेसमेंट ऑर्डर 144B में पास हो रहा है which has been passed by not following the procedure as per this provision, तो वो उसको नॉन एस्ट ट्रीट किया जाएगा। अब इस 144B9 और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की वजह से कई सारे ऑर्डर्स को सेटिसाइड किया गया, लेकिन ये अब इससे शायद बहुत परेशान हुए, तो 144B9 को राइट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, जैसे कि दैट इज जब से ये प्रोविजन आया था 144B, तब से ही इसको कह दिया गया एज इट इज ओमिटेड। लेकिन सर इन माय हम्बल सबमिशन 144B9 हो या ना हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर सेटल्ड। एनी असेसमेंट ऑर्डर पास्ड in violation of principle of natural justice by not giving adequate opportunity is liable to be set aside. Then sir, the last the provision next which I'll take is sir section 158AB. Now this provision of 158 capital AB has been introduced, which is as a measure of litigation management to reduce multiple litigation. इफेक्टिवली इसका सर पर्पस ये है कि जहां एक असेसी की के केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ, रादर आई विल टेक इट फ्रॉम दिस वे, 158AA जो पहले प्रोविजन हुआ करता था, उसमें सर ये था कि इफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन द केस ऑफ एन असेसी फॉर एनी असेसमेंट इज पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, देन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ CIT अपील फॉर एनी अदर ईयर ऑफ द वेरी सेम असेसी, यानी कि उसी असेसी का किसी और साल का सेम इश्यू अगर है तो उस केस में अपील फाइल नहीं की जाएगी और एप्लीकेशन फाइल कर देंगे ट्राइब्यूनल को कि ऑर्डर इश्यू सेम है, एंड अकॉर्डिंगली अपील तब फाइल की जाएगी जब वो जो ऑर्डर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में उसका डिसीजन आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली इफ द ऑर्डर ऑफ CIT अपील इज नॉट एज पर व्हाट हैज बीन फाइनली हेल्ड, देन अपील तब फाइल की जाएगी। ये प्रोविजन डुप्लीकेसी ऑफ अपील्स को हटाने के लिए लाया गया। उसी को एक्सपैंड करते हुए सर 158AB को अब लाया गया है, जिसमें कि अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ असेसी के केस अपने केस में किसी साल में या किसी और असेसी के किसी साल में पेंडिंग है ज्यूरिसडिक्शनल हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो CIT अपील या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट ITT या हाई कोर्ट एज द केस में भी अपील फाइल करने की जरूरत नहीं है, और इसका डिसीजन एक कोलेजियम लेगा। कोलेजियम जहां दो से ज्यादा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या कमिश्नर होंगे, वो डिसाइड करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली दे विल टेक अ डिसीजन दैट वेदर द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज आइडेंटिकल, एंड अकॉर्डिंगली अपील फाइल नहीं की जाएगी, एक एप्लीकेशन फाइल की जाएगी ट्राइब्यूनल को या हाई कोर्ट को एज द केस में भी, एंड अकॉर्डिंगली अपील अगर फाइनल ऑर्डर जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आता है वो डिफरेंट है, जो कि ऑर्डर अभी तक होल्ड किया है CIT अपील ट्राइब्यूनल ने, अपील तब फाइल की जाएगी। सो दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन 158AB in order to reduce multiple litigation. So the last provision which I'll discuss and which is the most talked about provision is regarding the updated returns. The concept of updated return which has now been introduced. Sir, 139 subsection 8 capital A is being added, which provides that any person, whether or not has furnished return under subsection 1 or 4 or 5, may furnish an updated return of his income or in respect of any other person in respect of which he is assessable in the prescribed manner form. So, sir, within a period of 24 months from the end of the relevant assessment year. तो सर 2 year की विंडो दी गई है, रिटर्न आपने ओरिजिनली फाइल करी है, नहीं करी है, बिलेटेड है, रिवाइज्ड है, व्हाटएवर द केस में भी, 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर की विंडो है जिसमें कि अपडेटेड रिटर्न फाइल की जा सकती है। पर्पस कॉन्सेप्ट ये है कि सर AIS स्टेटमेंट्स आती हैं, चीजें बाद में अपडेट होती हैं, असेसीज कैन सी देयर AIS स्टेटमेंट, इफ दे फाइंड सम न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम अप which probably they were not aware or anything comes up, then they can file their updated return. लेकिन सर उसमें कुछ एम्बार्गोज हैं, कुछ
कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको कि अपडेटेड रिटर्न मना की गई है, वो फाइल नहीं कर सकते, या किन कुछ सिचुएशंस हैं जहां अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती। तो पहले सर टेकअप करते हैं जहां अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं की जा सकती या अपडेटेड रिटर्न में किस टाइप के हम क्लेम नहीं कर सकते। 1, where return is of a loss, in that case updated return नहीं हो सकती। Second, effect of decreasing the total tax liability which was as determined as per return under 139(1) or 4 or 5। तो जो आपकी रिटर्न पहले फाइल्ड है उसके अगेंस्ट जो टैक्स लाइबिलिटी है जो उसमें डिटरमिन हो चुकी है उससे रिड्यूस नहीं हो सकती टैक्स लाइबिलिटी अपडेटेड रिटर्न में। थर्ड, द अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट रिजल्ट इन refund or increase in refund as was determined as per return earlier filed। तो सर ये सिचुएशंस हैं जहां अपडेटेड रिटर्न में कोई क्लेम या कोई ऐसे आप फाइल नहीं कर सकते। तो सर व्हाट आई अंडरस्टैंड टू पुट इट इन अ मोर इन अ सिंपलर मैनर, एक सर सुओ मोटो 148 है जिसमें कि 148 में हमने देखा है कि इट हैज बीन हेल्ड सेटल्ड लॉ कि 148 इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एसएससी। अकॉर्डिंगली सुओ मोटो 148 है, बिना प्रोसीडिंग्स के अगर आपको कोई लगता है कोई इनकम मिस हो गई है तो उस पे उसको अपडेटेड रिटर्न में इनकॉर्पोरेट करके दैट कैन बी फाइल्ड। अब सर फर्दर प्रोवाइडो है जिसमें प्रोवाइड किया कि कौन हु आर दोस पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल टू फाइल अपडेटेड रिटर्न। सर फर्स्ट, where search has been initiated under 132। Second, survey has been conducted under 133A except subsection 2 है जहां TDS TCS के सर्वेज होते हैं उसको एक्सेप्शंस में किया गया है। Third, where notice has been issued to the effect that any money, bullion, jewelry or article or thing has been seized or requisitioned under 132 or 132A of any other person belongs to such person। So 153C वाली सिचुएशन सर कि नोटिस इशू हो चुका है। Similarly, any books of account, documents seized or requisitioned which pertains to or information contained in that document or books of account relate to some other person। So in such situation sir, एक तो जिस साल की सर्च है या सर्वे है वो प्लस उसके पिछले 2 असेसमेंट ईयर, इन ईयर्स के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकती है। इन एसएससीज के लिए इन ईयर्स के लिए अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। देन सर अपडेटेड रिटर्न जो फाइल हो सकती है इट इज अ वन टाइम चांस, एक बार अगर फाइल हो गई दोबारा नहीं फाइल हो सकती। सेकेंडली, अगर कोई प्रोसीडिंग असेसमेंट की, रीअसेसमेंट की, रिकम्प्यूटेशन की, रिवीजन की कोई पेंडिंग है या हो चुकी है तो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। देन सर अगर असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है पीएमएलए, बेनामी, ब्लैक मनी एक्ट या सेक्शन 1990A इंफॉर्मेशन अंडर द एग्रीमेंट विद other countries and the same has been communicated to the assessee before filing the return, then updated return valid nahi hogi। Then sir in case where prosecution proceedings have been initiated, then again updated return in case of such person cannot be filed। अब सर यहाँ एक aspect what I find should be brought, जैसे उन्होंने सर्वे केस में किया है कि सबसेक्शन 2A के सर्वे को एक्सक्लूड किया गया है। सर हम देखते हैं टीडीएस के, टीसीएस के बेसिस पे प्रोसिक्यूशन हो जाते हैं, लॉन्च हो जाते हैं, तो उस चीज को भी यहाँ पे एक्सेप्शन में ला सकते हैं बिकॉज दैट शुड नॉट इन माय हम्बल ओपिनियन इम्पैक्ट एनी पर्सन फ्रॉम फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न। हाउएवर द एक्सपीरियंस दैट वी हैड, बिकॉज सिमिलर प्रोविजंस हमने देखे थे विवाद से विश्वास स्कीम के टाइम पे आए थे कि कौन कौन लोग वीएस में सेटल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उस सिनेरियो में इनफैक्ट ये इशू स्पेसिफिकली उठाया गया बट स्टिल इन द एफएक्यूज नथिंग केम आउट और ये हो गया कि प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग एक बार पेंडिंग है तो नथिंग डूइंग, नो वी सेटलमेंट इज अवेलेबल। टू माय माइंड लगता नहीं है कि इसमें कोई खास रिलैक्सेशन आने वाली है। देन सर द मेन कैच जो मैंने पहले भी कहा कि इट इज अ सुओ मोटो 148, तो क्या सर 148 टाइप होगा तो कुछ तो एडिशनल जाएगा। तो द प्रोविजन प्रोवाइड section 140 capital B is being introduced simultaneously and that provides that additional income tax will also be payable in addition to whatever tax
interest or fees, as the case may be, is chargeable on account of the income which has now been put in the updated return. In addition to that, additional tax shall be payable. And sir, वो होगा अगर updated return 12 महीने के अंदर फाइल की जा रही है from the relevant assessment year, तो 25% of the tax and interest payable. और अगर 12 महीने के बाद 24 महीने के अंदर फाइल की जा रही है, तो 50% would be the additional tax payable of the amount which is payable. सर जी, ये जो प्रूफ ऑफ पेमेंट है, इसके लिए सबसेक्शन 9 में अमेंडमेंट की गई है कि प्रूफ ऑफ पेमेंट हैज टू accompany along with the return. अब सर दो सिनेरियोज हैं जहां ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं की गई है, अब पहली बार की जा रही है, तो उसमें जो भी इंटरेस्ट है, फीस लेट फाइलिंग की, प्लस जो भी टैक्स पे बनता है उसके अलावा जो एडिशनल इनकम टैक्स है वो अकॉर्डिंगली 25% और 50% व्हाटएवर इज टू बी कंप्यूटेड डिपेंडिंग अपॉन कि कब फाइल हो रही है, दैट इज टू बी पेड. ये हमें 140 कैपिटल बी सबसेक्शन 1 में है. एंड द सेकंड सिनेरियो जहां रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड है, उस केस में जो भी एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट है उसका 25% या 50% वुड बी दी एडिशनल टैक्स पेबल इन दिस सिनेरियो. तो सर 139 सबसेक्शन 8A, 139(9) में amendment plus 140 capital B. These three provisions have been introduced, amended with respect to the updated returns, and with this I have already overshot. I'll give a quotas to my deliberation, and I thank you all from the bottom of my heart for the patient hearing. Over to you, sir. Thank you, Somil, for explaining it very nicely. Now I'll pick up some sections because the time probably may not permit us. So section 68, though Somil has talked about, that the source of the source in respect of any loan or borrowing will also be now proved by us. That is what the import of this proposed amendment is. That the nature and source will not be deemed to be explained by the SSC unless the person in whose name this loan or borrowing stands also comes forward and proves the nature and source. Now you kindly see the funny part of it. There are no exceptions. So does it mean that if I borrow loan from the bank, then also I will have to ask the banker that you have to explain the nature and source of the availability of funds at your end? Now this is something. Now, I mean, though all these things have been brought to the notice of the board also, and I believe that the due cognizance has been taken by the board, and let us see. But then this amendment, source of the source, I remember when I started practice, and even much before the start of my practicing, I commenced my practice in 1984. I mean, there used to be a law, and which always held a field that the source of the source will not be required to be proved. Then came Finance Act 2012. Okay, now for the purpose of explaining the share capital, share premium, in case of the closely held company, you want them to prove the source of the share capital. But all of a sudden, for no explicable reasons, the reasons which has been given in the memorandum is the pernicious practice of introducing unaccounted income through the masquerade of loan or borrowing. But then you cannot I mean, wield your sword in such omnibus and all-embracing manner कि आपने उसमें कोई exceptions ही नहीं रखे. I mean, this is something which is then section 79 capital A. Whereas a consequent of search or survey, if the total income of a person includes undisclosed income, then such undisclosed income now will not be adjusted against any unabsorbed appreciation. No brought forward losses will be adjusted, or even the loss of the current year under any other head or under the same head will not be available. Meaning thereby that any undisclosed income which is in consequence of a search or survey, now one will have to pay tax. If it is undisclosed income from undisclosed source, for that section 115 BBE is already there. I mean, which speaks of the tax rate of 78%. Now this talks of those incomes which are of undisclosed nature, but then which are from a definite source of income. So against such undisclosed income, now no set off will be allowed. But then of course,
if there is some undisclosed income from a definite source, and if there are statutory deductions which are available, then that will be allowed. That cannot be denied. So this section 79A, now this has come. Then one important amendment has been proposed in survey, and I tell you that amendment has been inserted in such a manner that it has gone unnoticed. Now survey, if you remember that during this pandemic period, when taxation and other laws relaxations and amendment act, which we often call as the TOLA, was brought, one amendment was made that who can do survey. Then it was made a part of TOLA that only those authorities who work under the superintendence of the Director General Investigation and the Principal Chief Commissioner of TDS alone would be able to or would be competent to do survey, meaning thereby that the power to conduct survey was restricted to the investigation wing and the TDS wing. Now that investigation and TDS now both are proposed to be omitted, meaning thereby that we perhaps have completed the full circle. Now the entire department, as they used to wield power of conducting survey heretofore, now this power to conduct survey now is proposed to be restored to all of them. So this is very important amendment which is proposed. Now one amendment, or rather few amendments which are there in section 148. As all of us know that section 147 to 151 kind of provisions have remained there on the statute right from 1961 till 2021. All of a sudden in 2021, Finance Act 2021 brought wholesale changes in the scheme of reassessment. And hardly a year had gone, again those very amended provisions are proposed to be amended further. So what is that amendment? First of all, the amendment is that while issuing notice under section 148, there was a mandatory condition of obtaining the prior approval of a specified authority. Now it is proposed that if that 148 notice is going along with an order under section 148A clause small d, now which itself is passed after obtaining the permission of the specified authority, then what is the fun or what is the use of obtaining another permissions for issuing notice under section 148 in such situation? Second amendment which is proposed is that, if you remember, on Finance Act 2021 now brought one section 148A. Somil ने भी बतलाया कि पहले assessing officer inquiry करेगा in respect of the information suggesting escapement of income, but then that inquiry can be made after obtaining prior approval of the specified authority. Then with reference to that inquiry, then he will have to confront it to the SSE. और वो जो confronting भी था SSE को, opportunity hearing भी जो SSE को था, वो भी after obtaining the prior approval of the specified authority था. Now इस proposed amendment में SSE को opportunity देने के लिए उन्होंने कहा कि किसी higher authority की जरूरत नहीं है, assessing officer at his own level उसको वो confront कर सकता है, opportunity hearing दे सकता है. Then जो amendment जो बहुत ही prominent amendment किया गया है, वो amendment किया है section 149 में. आपको यदि याद हो कि पिछले साल बड़ी ही उसमें कहा गया कि हमने 6 साल से लिमिट को 3 साल कर दिया है रीअसेसमेंट के लिए. वस्तुतः fact of the matter is that 6 years have been enhanced to 10 years. But anyway, beyond 3 years, उन्होंने conditions रखी थी कि that beyond 3 years, the case of any year up to 10 years can be reopened only when assessing officer has in his possession books of accounts or documents or evidence which reveal that income escaping or income likely to escape amounts to or is likely to exceed 50 lakhs of rupees. But then it should be represented by asset. So at that time, I mean, since I had addressed a number of webinars, therefore this issue was raised. Now probably some wisdom, positive or negative, now I will refrain from using that expressions, probably have prevailed. Now they said it's all right, beyond 3 years we would reopen a case only if there is evidence to the effect that the escaped income is rupees 50 lakhs or more, but then it should either be represented by asset or should be represented by any expenditure in relation to a transaction or event or occasion
or represented by any entry or entries in the books of account. So this is very important. Now this amendment has been made. Similarly, one amendment which has been made is that in case of the search or in case of the survey, now no assessment order will be passed unless joint commissioner, unless he himself is assessing officer. Without the approval of the joint commissioner, no assessment order will be passed. Now Somil has spoken about section 194 IA. 194 IA, if you remember, that a person who is making payment for the acquisition of an immovable property other than the agricultural land, is required to deduct 1% of the consideration paid or credited to the account of the vendor. And if that consideration is in excess of rupees 50 lakhs. Now, instead of saying 1% of the consideration paid or credited, now what is proposed is that 1% of the consideration paid or credited or stamp duty value, whichever is higher. So a person who is making payment for the acquisition of immovable property now will have to deduct 1% of the actual consideration paid or stamp duty value, whichever is higher, provided both of them should be in excess of 50 lakhs of rupees. As Somil has posed a question, now whether the mismatch, because this proposed amendment is in order to address the mismatch which used to take place, because when it comes to the offering of the capital gain at the end of the seller, stamp duty value or the actual consideration, whichever is higher. But for 194 IA, the actual consideration paid was the measure of the deduction of 1%. So there was a mismatch between the TDS return, which or from 26 QB. So this amendment seeks to address that mismatch. But then that mismatch is not addressed, because if you remember, under section 50C, now even the stamp duty value as on the date of agreement can be taken as the full value of consideration if part payment pursuant to the agreement has been made through the banking channel. So what would happen? Now suppose at the time of agreement, the stamp duty value was 1 crore of rupees. After 3 years, when that flat came to be registered, the stamp duty value became 1 crore 75 lakhs. Now, when the registration will happen, the registrar will say 1 crore 75 lakhs, you pay 1%. You deduct 1% out of it. Whereas that seller would be offering his income with reference to 1 crore because that relaxation has been given by the first proviso and second proviso, section 50C. So again, the mismatch would remain. Similarly, if the stamp duty value is not more than 110% of the actual consideration, in that case, actual consideration would constitute the considerations for the purpose of computing capital gain. Now, even in such a situation, so far as the registrar is concerned, he would say that 194 IA's dictate is you have to deduct 1% with reference to the stamp duty value. So again, the mismatch will remain. So 194 IA, this proposed amendment probably may not address that. Then yes, 198A. Now you kindly see. So though Somil has touched this 139A updated return, but then kindly see how many gaps and inconsistencies or contradictions are there, and how many equally interesting situations are there. Now, first of all, this provision, this proposed amendment of filing updated return has been made applicable from 1/4/2022, meaning thereby that on or after 1st April 2022, and of course after passing of this finance bill, now a person can go back for the previous 2 years. So after on or after 1st April 2022, assuming this finance bill will be passed in this form, now a person can file updated return even in respect of assessment year 21-22 as an assessment year 2021 also. So to that extent, now a person is enabled to file updated return on or after 1st April 2021. Now the second thing which I have brought it to the notice of the CBDT, that unless you amend the provisions of penalty, giving clear-cut exception that if a person files updated return, there will not be any penal consequences
nobody will come forward, because as per the existing language of section 270 capital A, there may well be a situation, unless some amendment is brought, that the difference between the income offered in updated return and the income previously assessed, the difference may constitute underreported income. Though intention of the legislature is not like this, but then who sees the intention? The assessing officers, as all of us know, they will go by the strict letter of law. They will say, now where is the saving from the penalty? So they will have to amend the penalty provisions, only then the benefit of updated return can be availed. Then one exception Somil, spoke about with respect to updated return is that it should not have the effect of decreasing the total tax liability, or it should not result in refund or increases the refund. Now I pondered over it, and one situation probably has not been covered, and the situation is, in case of a company which is required to pay tax on MAT, minimum alternate tax. Now any variation in the normal income tax, normal income, but the ultimate tax liability is there on MAT. Now that may vary the amount of tax credit which will be available to him in future years. So that situation probably now has been left unanswered, and therefore a company, as per the existing language of section 139(8)(a), may file an updated return by altering its normal income but paying the tax under MAT, and thereby increasing the amount of tax credit. So that situation now has been left unattended. Then Somil spoke about that who cannot file updated return, and one instance which he gave was, and which has been given in the act itself, that if a notice has been issued to a person to the effect that his money, bullion, jewelry, valuable article or things belonging to him have been found in somebody else's search, or his books of accounts, documents have been belonging to him, pertaining to him, relating to him, been found at somebody else's search. So what is the meaning of the notice is issued? Because when search takes place, say at my residence, and money relating to or belonging to Somil is found, now Somil will be assessed under section 148 as per the new scheme of reassessment. Now he will be issued only notice under section 148. Now how would he come to know that this notice is as a result that his money etc. has been found in Rakesh Gupta's place? So what is the meaning of notice has been issued? When there used to be notice under section 153C, then the person who was the receipt of that notice under section 153C now could have speculated that there was some search at some place where his books of accounts or money etc. have been found, and that is why this notice has come. Mere receipt of a notice under section 148 now would not be going to let Mr. Somil know that his money or his books of accounts or his documents etc. have been found at somebody else's search. So it will have to be explained as to what is the meaning of this notice has been issued. Then Somil also spoke regarding the updated return that a person who has been searched or who has been surveyed now cannot file returns for how many years? The year of search or survey, then 2 preceding assessment years. Then I asked this question from the person, from the CBDT. Now, suppose a person has been searched in April 2022, meaning thereby that assessment year 23-24 he cannot file updated return the year of search, and preceding 2 years. Preceding 2 years means assessment year 22-23 and 21-22. But then what about 2021? Because assessment year 2021 updated return can be filed within 24 months from the end of the assessment year, meaning thereby that for assessment year 2021, 24 months from the end of the assessment year will come to an end on 31st March 2023. So I asked this question in a very pointed manner, that in case of search or survey, though you are treating that person as untouchable insofar as this provision is concerned, but then you want to give him this benefit that he can file
update return for the third because of the 24 months from the end of the assessment. Well, no, we never intended. So there seems to be dichotomy between the expressions used by the legislature and the intention of the board. Then any proceeding for assessment, etc. is pending. Then also one cannot file. Now kindly see, now assessment, can remain pending, up to 9 months from the end of the assessment year. So if an assessment is pending, then you want to deny him the benefit. Now this is something which should not be there. Therefore, it requires amendment, and I am quite sure that some amendment in this proposed amendment may come. Then regarding prosecution, yes, only those prosecutions which have got some intricate, direct or proximate linkage or connection with the income alone should come. As Somil has pointed out, that suppose if somebody has deducted tax, but then probably may have defaulted in not paying it within time, and because of that prosecution has commenced. Now merely because that kind of a prosecution or prosecutions on account of some technical breach has commenced against a person, and then you debar him from filing the updated return, now is something which is something which cannot be. Then they say that we'll give you the credit of advance tax. Very fine. Then I ask a question. Okay, advance tax is all right, but then if somebody has paid taxes after the expiry of 31st March, इनकम टैक्स के लिए विनोद जी जरा बंद करेंगे प्लीज अपना. Yes. Yes, sir. Please proceed. हाँ, so एडवांस टैक्स तो आप क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन किसी ने यदि सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया और उसने रिटर्न किसी वजह से नहीं भर पाई, तो क्या आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्रेडिट नहीं दोगे? So when this dichotomy, this inconsistency was brought, then because advance tax का credit, advance tax का एक definite connotation है इनकम टैक्स एक्ट में, जो 31 मार्च तक पे हो गया प्रीवियस ईयर में. तो ये अमेंडमेंट की आवश्यकता है इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट में. तो let us keep our fingers crossed. Then आप काइंडली सी, यदि किसी ने अपनी पहले रिटर्न भर ली है, उसके बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल करता है, तो नेचुरली 234A का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिटर्न तो एक बार भर दी उसने, तो 234B और C लगेगा. लेकिन इन्होंने क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की है? Even in that situation, when he has already filed his return, SSC shall be liable to pay such tax together with interest payable under any provisions of this act for default. एडवांस टैक्स वाला बाद में दिया है, और delayed payment of advance tax, but interest payable under any provision of this act for any default. ये I mean this much of expressions used is something which smacks of some kind of mischief at the end of. So updated return का जो concept है, ये लाया इसलिए गया है कि चूंकि 148 में 3 साल के असेसमेंट तक उनको सिर्फ इनकम एस्केपमेंट प्रूव करनी है विदाउट एनी कोई लिमिट की उसमें आवश्यकता नहीं है. तो इन्होंने कहा है कि इंफॉर्मेशन विद द ब्लास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग टू द पोजीशन ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट, कि यदि किसी व्यक्ति को यदि 24 महीने के अंदर भी लगता है कि उसने हाँ कोई इंफॉर्मेशन या कोई इनकम डिक्लेयर नहीं की, so he should be given time. So Somil has said कि this is in a way to avoid the invite of 148. This is so to that extent this provision is good. Now cryptocurrencies, digital virtual assets, virtual digital assets. Now we all had been seeing in the newspapers controversy. Now whether by putting the cart before the horse, whether you have legitimized or whether you have said legal. I was reading in today's newspapers, because in some of the cases which my office is handling in Supreme Court, now this kind of a question has been put by the lordships. Now whether now what is the stand of the government? Because by taking 30% out of it as the tax, now an indication perhaps now is being gathered by the taxpayers as if cryptocurrency transactions have become legalized, though the government has said that all options are open on the table and they are in the midst of consulting the taxpayer with the stakeholders. But then we must be conscious that merely because the government has imposed tax 30% does not mean that they have given legitimacy, because Income Tax Act is concerned with taking its share of taxes, whether that income is legal or illegal.
जब हम पढ़ा करते थे even smuggling income है, so income tax act is concerned, is bothered for collecting, tax on it. So merely because the income tax is taking tax out of the smuggling income, that doesn't mean that smuggling has been legitimized. No, it's not like this. So those questions are there, but then there are issues and challenges at the end when the payments will be remitted, because the tax deduction at source liability has been fastened at the end of the person who is making payment. Now, how will it be discharged? Several fact situations. So probably, there will be, since government now brought it, but then is still in the midst of consultation with various stakeholders. And you must have read in the newspapers that the finance ministry officials have held meetings with the crypto exchanges representatives. And some changes will be there, but then one thing which is sure is that the government wants to take its own share of taxes out of the crypto payments. Then freebies, or if I say the benefit of the perquisite while exercising business or profession. Now, there was no, though it was taxable in the hands of the recipient of the benefit or perquisite, but then there was no effective mechanism with the government to track. Therefore, now it is proposed that in case such benefit or perquisite is more than 20,000 rupees in a year, then the person who is doling out such perquisite benefit during the exercise of the business or profession now will have to deduct tax, so that the payment can be, so that the benefit can be tracked and government can see, the tax department can see whether the person who has availed these benefits has offered the value of such benefit or perquisite in his income tax return. So 194R, now in that sense is proposed. Then Somil has, now regarding the trusts, now trusts, probably I would say are the institutions, charitable trusts particularly, and those trusts which are exempt under section 1023C 4, 5, 5, 6 or 6A. Now, though the benefits have been given under section 11, 12, 12AA, 12AB and 1023C, but then they bear the brunt of very frequent amendments. I do not know what kind of intelligence inputs are there with the government, and because of which there is a very strong hot pursuit and witch hunt after these trusts. And this year's finance bill is not an exception, to those kinds of changes. So now the proposed amendment says that we will tell you that books of accounts have to be maintained, which books of accounts have to be maintained, for how many years you are required to maintain, where you have to maintain them. So that kind of a power now is being taken under the proposed amendment. Though that is a different matter, that in case of those who are carrying on business right from 1961 till 2022, the government has not told us so far as to what kind of books are required to maintain. If you remember, under section 44AA subsection 2, the only requirement in case of a person carrying on business is that he must maintain such books of accounts based upon which an assessing officer should be in a position to compute his taxable income. That's all. In case of professionals, of course, rule 6F has been made, but in case of persons carrying on business, nothing has been made. But then in case of the charitable trust and institutions, now the power is proposed to be taken in this finance bill, whereby the government will tell, or the board will tell and prescribe, that which books of accounts are required to be maintained by them, how are they required to be maintained, where would they be kept, for how many years will they be kept. Then application of income will be allowed to you, or will be treated to be application only when it is actually paid. Now this is something, in my respectful submission, is somewhat regressive, because between the mercantile system of accounting and the cash method of accounting, definitely mercantile system of accounting is more scientific method of computations of income, or for the purpose of maintaining books of account. So now, because of this kind of a limitation, now which is proposed in this finance bill, whereby all the charitable trust institutions will have to follow now cash method of accounting. Otherwise, to keep the books of account and to find out the application of income, now itself will be the subject matter a lot of reconciliation. Therefore, to that extent, I would say that this proposed amendment is somewhat regressive. Then one thing which is good, that in case registration is refused or is not granted, then how the income of such a supposedly charitable organizations are to be computed. Because if you have seen, you must have seen
lots of adjustments or lots of intimations have been received containing such kind of adjustments in case of such trusts or institutions where registration was not available, that the CPC in Bangalore now has sought to tax such trusts and institutions on the gross receipts. So probably in order to address this kind of absence of provisions, now the clear-cut provisions are proposed by this Finance Bill 2022, whereby now it is proposed to be clarified as to how the income in case registration has not been granted or is refused would be computed. So friends, now it's almost 1.5 hours. Though there are other issues, but then we can wind up because we have been told that the other speaker on the VAT, on the state budget. So thank you Satish Gupta ji, Tarun Modi ji, office bearers of all the 3 organizations for giving us opportunity to be interacting with all of you. Thank you from the core of my heart. If there are questions, then we can take. Thank you so much, Rakesh sir. Thank you so much, Somil sir. Yes, sir, Rakesh sir, there are some questions. So maybe I'll just take it one by one. RN Marwal sir keh rahe, in case of sale of land, whether SSC would be required to prove the source in the hands of the buyer even. देखिए Marwal sir, now इस finance bill में इसको touch नहीं किया गया है. What has been touched in finance bill is that the source of loan or borrowing. So when you sell an asset, it is neither the loan nor the borrowing, right? So Finance Bill 2022 does not impact your obligations with respect to the receipt of sale considerations. That will be governed by the hitherto existing provisions. Yes. Right. Sir, one more question which I have received is, so the Finance Bill 2022 actually has provided a specific tax regime for virtual digital asset, and that has to be from 1st April 2022. So what should be done that the transactions which has been happening from last 3 to 4 years? So what's the best way to disclose income from that? Yeah, I mean those incomes, when you are talking of 3 or 4 years, then I must say that you must have already disclosed them. Now, if you for example, if an asset has been holded from last 3 years, so whether it will be classified as a capital asset and it should go for capital gains or in that front. On and from 1st April 2022, income from the transfer of the virtual digital asset now is to suffer the tax at the 30%. Whether you are holding it as a trading asset, whether you are holding it as capital asset, it is of no consequence. The consequence can be only with reference to the taxability of the gains which you have earned in the earlier year. Now, since this new regime has come from 1st April 2022, therefore, in the absence of any definite tax regime, then all general principles of taxation of trading assets or the investment assets that will apply. That much I can say. Okay. So I just open the floor to everyone else who, if you have any questions, you may ask upon to the Rakesh sir and Somil sir. Or you can post it into the chat box also. I think that will be too late because it's already 5:30. No, I don't have any problem, but then you kindly see your time. Sure, sir. Just waiting. Okay, so sir, we do not have any questions right now. If we get further questions, we'll connect to you for your able guidance. So I just invite see network. So would you please set us free? Yes, sir. I'll just invite see network Sada sir. Provide a vote of thanks to you. Thank you. Thank you. Yeah, network sir. सर आप म्यूट पे हैं। सर आपका आवाज नेटवर्क सर आवाज शायद हाँ अभी भी नहीं आ रही सर। आपकी जो बैकग्राउंड है ना जहां जिराफ anyway sir, your voice is not coming, but then we are understanding that you are saying thanks to us. We accept it with utmost humility. Sir, on his behalf also and the entire behalf of thank you very much, sir. Thanks a lot, sir. Okay. Dr. Gupta sir, and for giving your precious time to all of us. Our pleasure, sir. Our pleasure, sir. Thanks a lot, sir. Thank you very much. Sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, Rakesh sir. Thank you so much, Somil sir. It's a great time with you.
Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. So, my dear all participants, it was all about on Union Budget 2022, जहाँ पे Somil sir and Rakesh Gupta sir has enlightened on various provisions related to updated return. क्या क्या changes हुए हैं national faceless assessment centers में, क्या TDS provisions related changes हुए हैं, 194 IA related changes, इन सब पे बहुत से डिटेल से enlighten किया राकेश sir और Somil sir ने. Now we will head towards what has been happened in the state budget 2022 and let's check. Yashasvi sir, have you joined it? Yeah. Just a moment. No, we'll just wait Tarun, for we the have to Yashasvi sir. call him. Actually, time 2 minutes बचा हुआ है ना. Yeah, sir. I'll just call Yashasvi sir and we'll get back to you. से एक रिलैक्स नहीं देते चलाने में. Hello, I think we have Yashasvi sir in between us. Yashasvi sir, you are there, sir? मेरी आवाज आ रही तो बस आ रहे हैं 1 मिनट में. हाँ सर, आ आ रही रही है मेरी आपकी आवाज? आवाज भी. हाँ, बात होगी, वो आए भी हैं. अच्छा. हाँ सर, आ रही. हाँ, sir has joined. Yashasvi sir has joined. So after this session on union budget, let us move towards the Rajasthan budget, which has been presented on 23rd of February 2022. And we have a very eminent speaker in between us, जो किसी भी introduction के मोहताज नहीं है. We have been hearing a lot of amendments related to provisions. Every time it's a budget, it's a ritual that we have Yashasvi sir in between us to enlighten us कि इस बार का जो स्टेट बजट है उस स्टेट बजट में क्या ऐसे ऐसे चेंजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका हर प्रोफेशनल को एक ध्यान रखना चाहिए. वैसे तो यशस्वी सर के बारे में हम सभी जानते हैं, बट टू जस्ट इंट्रोड्यूस इन ए शॉर्ट स्क्रिप्ट यशस्वी सर के बारे में, तो यशस्वी सर इज अ फाउंडर पार्टनर ऑफ यशस्वी शर्मा एंड एसोसिएट्स and he has an experience of over 19 years in the field of indirect taxes in GST, VAT, service tax, and other commercial laws. He has been appearing before the first appellate authorities tribunals for more than 15 years now and has various landmark judgments under his belt, which has been followed in the subsequent cases also. He is also associated with leading national and international law firms and companies, including Big Fours, as an indirect tax consultant for nearly 2 decades as of now.
Yashasvi sir has been certified faculty for GST by the ICAI also. He has also been felicitated by the Commercial Taxes Department, Government of Rajasthan, and by the Honorable Judge of Supreme Court in recognition for his tireless efforts and remarkable contribution in the formation of GST law and process. So, sir, जब भी सबसे पहली बात करते हैं indirect taxation की, जो सबसे पहला नाम हम सभी के दिमाग में आता है, वो obviously यशस्वी शर्मा सर का ही होता है. Sir, you have been there as a guiding force since a long time. So thank you so much for that, sir. And we invite you today to enlighten us that what has been new for all the professionals in State Budget 2022. So over to you, Yashasvi, sir. थैंक यू तरुण जी. Welcome, sir. नमस्कार भाई साहब. मिस्टर सतीश जी भाई साहब, प्रेसिडेंट RTCA, मिस्टर नटवर साडा, प्रेसिडेंट DCA, प्रेसिडेंट उदयपुर टैक्स बार. I can see my elder brother GP Gupta also there. The office bearers of the respective associations, my fellow colleagues in profession, and ladies and gentlemen, I wish you all a very good evening. First of all, it was, whenever I hear something like that my introductory part. But आज जो तरुण ने बोला वो बहुत ज्यादा ही बोल दिया. ऐसा कुछ भी नहीं है कि टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें और मेरा ही नाम आए. Tarun and all the youngsters are really coming forward in this field of indirect taxation. हाँ, ये बात सही है कि जब मैंने प्रैक्टिस 20 साल पहले शुरू की थी तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में केवल एक CST या वैट RST हुआ करता था और लोग ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसमें इंक्लिनेशन दिखाते नहीं थे, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत मुझे इसकी जानकारी हो गई. But nevertheless, with my folded hands, I accept all the beautiful words by whatever Tarun asked for me, and I hope and wish that I could, maintain that kind of thing in your hearts always. So thanks for your blessings. At the very outset, I would like always look forward. Thank you so much. At the outset, I would like to thank RTCA, TCA, and the UTBA for providing me an opportunity to share my thoughts on the state budget 2022-23. RTCA and TCA are always proactive in discussing the latest issues related to the professionals. And I have been, fortunate enough to be associated with these two pioneer associations of Rajasthan practitioners. And as far as UTBA is concerned, I have been to Udaipur under their, flagship programs many times. And the enthusiasm was there, its members have. It really motivating and commendable at the same time. So I thank the UTBA also from deep of my heart. Friends, it indeed a matter of privilege for me to discuss the budget, which I think is, presented with a vision of 10 years at least. Because when you see the connectivity of the cities between the laying of the roads, laying the benefits which are given to the farmers, the laying of new medical colleges, new schools. So this is a far-fetching results, you can say. And at the same time, we should also understand that what is budget? Budget is nothing but a collective information which is provided by the government, and how the revenues will be collected, how the revenues collected by the government would be expended. Will it be in the nature of revenue? Will it be nature in the capital? So all these things are included in the budget, and all the four corners of the society, be it the sports sector, health sector, education, social engineering for that matter, the agriculture, the employment, everything is being discussed and considered while framing the budget of any territory for the state or the union. So that is how the budget goes. And the list also goes on and on. But I would be restricted myself today
Of course, we will have a bird's eye view. हम एक बहुत छोटा सा एक बजट को देखने की कोशिश करेंगे कि इस बजट में क्या क्या है. But my emphasis would be, being a tax professional, on the implication of this budget on the taxation, how the taxation will flow, and particularly VAT and the allied commercial laws, which were in force before the 30th of June 17. So we would be emphasizing on those particular aspects. But it is indeed, very important to understand that how the budget will directly or indirectly affect the business, the trade and industry. And of course, if it will affect the trade and industry, then the professionals would not be, remain untouched with it. So how it, it affects, basically, if you see that it becomes just a jugglery of some statistics, if the announcements are not properly executed. Having said that, if we have the, as I told you, the bird's eye view of the budget, then it looks like very rational, where you see that if the revenue is not at par with the expense, which is there in the budget statistics, if you go through, then it is not very less also. You cannot say that, the expenditures are less or the more and the revenues are less, but it is, you will find that more or less these are going hand in hand. Friends, the Chief Minister in its marathon speech of 3 hours, he has announced some schemes and, चाहे वो medical की field हो, चाहे education की field हो, चाहे agriculture की field हो. And unko, he did not even afraid of admitting that the old schemes are also needs to be restructured, right? और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसको रीस्ट्रक्चर करके इन स्कीम्स के एग्जीक्यूशन पे मुझे कुछ प्रॉब्लम समझ में आई है. पर्टिकुलरली जो एक एम्बिशियस उनकी स्कीम थी, जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसको हम MLUPY के नाम से जानते हैं, उसके अंदर भी जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अर्लियर जो इसका वो था, जो इन्होंने स्कीम दी थी, इट केम आउट विद 2 ऑप्शंस, आई वुड से. एक ऑप्शन ये था कि आप डायरेक्ट बैंक में जाएं, वहां से लोन ले लें और फिर गवर्नमेंट से सैंक्शन लें कि भाई हमको सब्सिडी 6%, 4% एट द केस में भी अप टू 10 करोड़ लोन पे मिलेगी. और सेकंड ऑप्शन उसका था कि आप पहले सरकार से सैंक्शन ले लें और उसके बाद आप बैंक के पास जाएं. इन्होंने पिछले साल कुछ अमेंडमेंट किया, एंड what they did with the amendment is that if you directly go to the bank and get the loan from the bank directly, and then you are approaching the government for the subsidy, MLUPY. So in that case, what they did that आप बीच में उसको मना कर दें कि तो आप पहले हमने ऑप्शन दे दिया कि आप बैंक के पास चाहे पहले से जाके ले लें, फिर बाद में हम सब्सिडी दे देंगे. उन्होंने बीच में उसको रोक दिया. And I had, a few discussion also a few days back, some of our colleague only. तो हम उसमें उस वक्त ये बातें कर रहे थे कि साहब इस स्कीम को प्रोमिसरी एस्टोपल पे हम हाई कोर्ट क्यों नहीं ले जाएं? Why don't we approach the high court on the basis of the promissory estoppel? कि आपने कोई हमसे प्रॉमिस किया, हमने एक्ट अपॉन कर दिया और अब आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं होगा. So the beauty is that he accepted that some execution problems are there in these schemes. Now he has provided that one-time benefit will be given to all those people also who have acted upon this and taken the benefit of that particular clause. So it doesn't mean that it will revive, but the person who have opted upon, acted upon, and took benefit of that particular thing, then that benefit will not be denied, और हम उसका वो benefit उनको देंगे. And I am sure that many of us might be doing, because I have seen people, that they are working in this in these subsidy schemes. And at the same time, I would request that all the youngsters, they also come forward and do these kind of schemes, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रोफेशन तो धीरे धीरे डिम हो रही है, उसमें नए चीजों की जो अपॉर्चुनिटीज हैं. So we need to expand ourselves. We need to expand our wings and try to fly somewhere else also. हम ये सब जानते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक्सपर्टीज के बिना कोई बिजनेस शुरू भी नहीं हो सकता है.
right from the beginning of the business till it reaches to 100 crores or 1000 crores or, big company, you always need a chartered accountant there. So this is one field which is not that much exploited by the chartered accountants. तो चाहे RIPS हो, चाहे ये subsidy की schemes हो, इसमें अपने को दिमाग लगाना चाहिए. Having said that, I would come back to the topic. आपको ध्यान होगा 1 February 2022 सेंटर ने बजट पेश किया कि हम 100वें उसके हिसाब से 25 साल का बजट हम आपको पेश कर रहे हैं. तो चीफ मिनिस्टर was not no less. He has also taken a leaf out of it and he has presented a budget without saying that it is for the next 10 years. But it seems that it is, with the vision of 10 years, this budget is being presented, because you will see that the whatever kind of developments or whatever kind of announcements he has made in the budget are not going to meet within a year or two. So we have to, be sure that it will be a far-fetching budget. एग्रीकल्चर बजट अलग से इसमें पेश किया गया और उसमें काफी टाइम मुख्यमंत्री महोदय ने दिया. ये कहा गया कि दिस इज the first time ever that a separate agricultural budget is presented by any of the governments in India. So that is one unique feature was there with this budget. As far as the evaluation of this budget is concerned, friend, I would say that in many aspects, the budget looks balanced, as it is not putting any extraordinary burden on the fiscal, right? If you will see that 23 last year's budget, it was around 38,000 crores deficit, fiscal deficit. Kya aaya, kya gaya, kya deficit raha. So it was around 38,000 crores. And this year is that it has come down to 23,000 crores. So this shows that, lot of efforts have been put in, and they are trying to bridge the gap, what is there between the revenue and the expenditures. One good thing which I saw in this, noted in this particular budget, is increase in capital expenditure. When you talk about capital expenditure, I need not mention what is capital expenditure. It will be flowing in 3, 4, 5 years. So what happens if you just go through these statistical jugglery, what I was talking earlier, and you will realize that 14,000 crores additionally given as the capital expenditure. Now, what does that mean? It means that it will certainly generate more business. It will certainly generate more employment, because the government is going to expand on capital assets, which will be on a recurring basis, and it will be giving effect in more than 1 year. So that one good thing which I noticed in this budget. As expected, friends, this budget was, we all were expecting many things in this. उसमें सबसे being a professional, हम ये चाहते थे कि amnesty scheme हो रहा जाए. The old amnesty scheme was very good. It was the best scheme ever the state government have come out with. But the new schemes, 2 new schemes they have introduced, and they are just like a dream schemes. So I will urge each and every one of you to encourage your clients to go for it. The benefits what these schemes are carrying, I will discuss with you in next few minutes. But let me tell you this, you cannot expect much and anything better than this scheme. So whatsoever demands are there, you will see that how rational this scheme is made, and government is, they are willing to wipe off the old demands. In fact, yesterday we had a meeting with the Commissioner of Commercial Taxes. He invited all of us. Satish ji and Natwar ji were also there. So what he said there, that we just want to clear the old slate. We just want to rewrite a new thing in that, and that is very good. I think the intent of the government is to move forward, right, and to just remove whatever the old thing is. And friends, when I will discuss with you the provisions which are inserted in the finance bill through section 174(2) capital B within bracket in the RGST Act, then you will realize that the intention is very clear. The government really wants
to clear all this, and they want to begin afresh in GST. They don't want to carry any sort of demands in whatever relates to the earlier laws. So when we'll discuss 174 within bracket 2 capital B, then you'll realize that how things are evolving and what the government is trying to do, right? And one thing is for sure, that once you know that this demand is not recoverable, meaning thereby if you do not have anything behind that if this demand is still persisting and I do not have anything to get it from, I don't have any property to be attached against this demand, then what is the logic of keeping it alive? So they have what they have done, they have shown that, and that's the way it should be. I mean, you cannot go on and on with all these things that कब क्या होगा, नहीं, जो डिमांड नहीं आ सकती है उसको खत्म करो और आगे बढ़ो, whatsoever it is. एमनेस्टी स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम सब लोग बार बार कह रहे थे कि साहब हमारे को एक रेक्टिफिकेशन के लिए कुछ करो, उसकी तारीख निकल गई, रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट की तारीख निकल गई, जो पिछले साल सेक्शन 33(4) में और 34(3) में पिछले बजट में वैट एक्ट में प्रोविजन में चेंज करके डेट्स को एक्सटेंड किया गया था, पावर्स को इंक्रीज की गई थी, डायरेक्टली अब असेसिंग अथॉरिटी को फाइल कर सकते थे. तो ये सब चीजें इस एक्ट में चेंज हुई है. मैं आपसे भी इसका अभी बात करूंगा. सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज है वो आईटीसी से रिलेटेड है. नाउ इट हैज बीन एड्रेस्ड रीजनेबली, एक रिलेटिवली रीजनेबल मैनर में उसको उन्होंने डिस्कस किया है, और जो इम्प्लीकेशन पिछली बार थे उन इम्प्लीकेशंस से काफी कम इम्प्लीकेशन रखते हुए इन चीजों को आगे बढ़ाया गया है. एंड इन एडिशन टू दीज स्कीम्स, स्टाम्प ड्यूटी, मोटर व्हीकल एमनेस्टी, ये दुनिया भर की एमनेस्टीज और इंट्रोड्यूस की गई है. और let me tell you one thing. Yesterday we had the meeting, as I told you, with the CCT, and the ITC matter was deliberated in detail. One thing is clear, what the discussion was, that they are reluctant that they will not give any ITC for the defaulters, and it should be like that. If any defaulter is there, then in that case the ITC which relates to that particular defaulter will not be allowed. That's for sure. And I don't think by the body language of those officers, of top officers of the executory, it doesn't look that they are intent to give the defaulters ITC to you. So let us be practical and try and get as much as benefit of this particular scheme, right? So in this backdrop, I would share my PPT and start with it, so that we can go with it. Yeah. Tarunji, can you see that? Yes, sir. We are able to view it perfectly. Okay, thank you. So now this is what we are here to discuss for, right? मुख्यमंत्री जी ने ये लाइनें पढ़ के भाषण की शुरुआत की और ये कहा कि वसुंधरा जी, मैं आपसे कुछ एक आई एम टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ योर पॉकेट एंड आई एम गिविंग इट. एंड आई थिंक ये जरूरी भी था. जो 3 घंटे का भाषण उन्होंने पढ़ा, तो ये और किसी के लिए चाहे हो नहीं हो, खुद के लिए जरूर था. और ये उन्होंने वादा भी खुद से किया कि मैं थकूंगा नहीं, 3 घंटे में बोलूंगा और थकूंगा नहीं. So it was apt to start with the budget, which is really कि उसको अगर पूरा करना है तो हौसला रखना ही पड़ेगा. There are so many announcements in this particular budget, and this is what I have already discussed with you. What is budget in nutshell? एक बिल्कुल छोटी सी चीज में क्या टैक्स से रेवेन्यू सरकार को मिली और क्या उन्होंने एक्सपेंडिचर किया, ये मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में 23 तारीख को प्रस्तुत किया. First of all, let us just have a bird's eye view on the salient features which are which relates to the budget 22-23. As far as the e-way bill limit threshold is concerned, friends, earlier it was 50,000 initially when 2017 the act was introduced. Then gradually it increased. It was increased to 1 lakh by the state government. And 1 lakh, I don't think in today's scenario is a big amount. So now they have proposed to amend it
by further 1 lakh, and then the limit to threshold limit goes up to 2 lakhs. So this is one important change which is being proposed in this budget. I have already told you that with एक 11 सूत्री कार्यक्रम के साथ 42 मिनट का एक separate agriculture budget पेश किया गया. Lots and lots of announcements for the farmers and the agriculture sector. So this is one important thing. As I already told you that health, education and employment, agriculture was the thrust area. एक रोड सेफ्टी एक्ट भी इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है. उसकी नीटिग्रिटीज जब ब्लैक एंड व्हाइट में आएगी तब पता लगेगा. और उसके प्रमोशन के लिए एक जयपुर में रोड सेफ्टी का इंस्टीट्यूट भी एक जयपुर के अंदर प्रपोज्ड है. सो दैट विल आल्सो बी वर्किंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज. सब्सिडी कुछ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे दी गई है. अगर आप फैक्ट की बात करें तो करीब 150 पे 3% और उसके ऊपर दो रुपए की 3 रुपए और 2 रुपए रिस्पेक्टिवली सब्सिडी अनाउंस की गई है. So that will certainly help the small domestic consumers. But ठीक है, अब if you are going in that direction कि हमको कुछ free में ही कुछ करना है और दिल्ली वाली स्टाइल में काम करना है, then it is okay for the small consumers. This is a good thing and it will definitely support in a very little manner, but it will definitely support them, right? यू ट्रांजिट हॉस्टल भी एक दिल्ली में बनाने की बात है. ब्लॉकचेन के लिए एक्सीलेंस का एक सेंटर बनाया जाएगा जयपुर के अंदर. यू सी दैट वंस ऑन 1 February इट वाज अनाउंस्ड बाय द मैडम कि हम 1 अप्रैल से वो लेके आएंगे डिजिटल करेंसी RBI. तो अब एक नई चीज जो चलन में आ गई पॉलिटिशियंस के लिए, बेसिकली ब्लॉकचेन पे आधारित चीजों को आगे बढ़ाना. So this is good. It is the need of the hour, and one must understand that without the technology in coming times, nothing could be done. So this is also no exception. उन्होंने एक excellence center blockchain के लिए राजस्थान में बनाने की एक कवायद शुरू की है, and that is very good. I think it is a good move. This line is really breaking the news all the time. That the pension scheme which was in 2004 was discontinued by the state government. Now they have restarted it. That after the people who have joined after 1 April 2004, they will also be given the benefit of these pension schemes, and they will be benefited with it. So I think more than 3 or 4 lakh गवर्नमेंट सर्वेंट्स वुड बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम. अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको अगर देखें, क्यों 10 साल बाद की बातें मैंने करी, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट को देखें तो इसका इम्पैक्ट 2030 के पहले नहीं आएगा, क्योंकि 2004 की बाद जो ज्वाइनिंग है वो लोग रिटायर होने लगे हैं करीब 30-31 साल के बाद. अगर माने कि 25-26 साल की सर्विस एक आदमी करता है, तो दोज पीपल विल start getting these pensions only after 2030, what I mean to say. Right. This is one important change, and it was badly needed also, because this was the industry who was the most rigorously hit in last 24 months or so. So even before that, but the pandemic, the industry was asking repeatedly that we should be declared as an industry in the state of Rajasthan, because everybody knows that the economy of Rajasthan depends mostly on tourism and the agriculture. So both of these two aspects of the economy, they have properly taken care of. By giving it a status of an industry, this will definitely help in so many things, in electricity charges, and in giving the land for conversion purposes. जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, अकॉर्डिंगली सब चीजें इसके अंदर चेंज होके आती जाएगी. एक जो SGST का रिएम्बर्समेंट इस इंडस्ट्री को मिल रहा था, जो हमने बहुत कोशिशें करके इंडस्ट्री के साथ उसको दिलवाया, वो एक अच्छा काम उसमें 31/3/22 तक उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की घोषणा की है कि भाई आप 3 महीने आगे इसको हम और बढ़ाते हैं. आपका जो SGST पार्ट का रिएम्बर्समेंट होगा वो आपको 3 महीने का और करेंगे. द डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड टिल द 31st of March.
This is also good move that Rajasthan Industrial Security Force वो CISF की तर्ज में बनाने जा रहे हैं। टूरिज्म के लिए एक अलग से स्कीम आ रही है जो रूरल टूरिज्म स्कीम है, वो अभी आई नहीं है, बट इट इज अंडर प्रोसेस एंड आई होप that with the RIPS we'll talk later, then along with that it will also be out, and some good and impressive benefits would be there in when this scheme comes in the public domain. MSME का जो एक रिलैक्सेशन था इन द फॉर्म ऑफ कि आपको MSME को कुछ छूटें दी गई थी कि आप उसमें इतने साल तक आपकी ऑडिट नहीं होगी, कोई आपके लिए इंस्पेक्शन नहीं करेगा या आपको किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो कोविड की वजह से 1.5-2 साल तक इंडस्ट्रीज बंद भी रही, इंडस्ट्रीज इस चीज का फायदा नहीं ले पाई, तो उनकी डिमांड पे इस 3 साल के पीरियड को बढ़ा के 5 साल किया गया है। एंड आई थिंक दैट इज अ गुड मूव एज फार एज the MSME is concerned, because these are very taxing times, we all know. So that is a good move. Now let us see what tax proposals are there and what because there is very less the state government nowadays can do, because after GST everything has gone in center's court, and you cannot do anything with regard to the rate hikes are concerned. As far as the goods of entry number 54 accepted those goods, you cannot do anything in that. So fortunately the 54 entry 54 schedule 7 constitution to the act, that particular thing has not been touched upon, usko kahin छेड़छाड़ कहीं नहीं की गई है, जो कि अच्छा है। वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या हो रहा है वो सब जान रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी आने वाला है, बट गवर्नमेंट एटलीस्ट they have not increased any tax on those particular 5 items. Different amnesty schemes introduced. When I say different, it means that they have introduced 2 amnesty schemes. One is for those goods which have been subsumed in the GST law, and another scheme is for those particular goods which falls under entry 54 of the 7th schedule of the Constitution of India. So those five goods are petrol, the HSD, the ATF, the natural gas, and the liquor, alcoholic liquor for human consumption purposes. So those 5 goods हम पिछली बार ट्रेड की तरफ से भी और हमारी अपन प्रोफेशनल्स की तरफ से भी ये सब चीजें हमने डिपार्टमेंट को कई फोरम से रिप्रेजेंट किया था कि आप ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं, ये जो 5 गुड्स हैं इनसे रिलेटेड अगर कोई डिमांड है तो उनको भी आप एमनेस्टी में लेके जाएं। तो सरकार ने एक डिफरेंट एमनेस्टी उनके लिए भी इस बार निकाली है, एंड दैट इज आल्सो वेरी गुड एमनेस्टी। वी विल सी इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हाउ इट इज वर्किंग। Now, by amending the section of the RGST Act, as I told you earlier, वो डिटेल में अपन नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे, वो पावर्स असेसिंग अथॉरिटीज की कमिश्नर लेवल तक बढ़ा दी गई है। जो सेक्शन 52 ऑफ RVAT एक्ट की थी वो वेवर की पावर्स भी बढ़ाई गई हैं। दैट वी विल आल्सो डिस्कस, एंड आई विल टेल यू दैट हाउ ड्रास्टिकली these limits have been increased in favor of the assessing authorities. As far as Rule 21 is concerned, the notification is already out, and they have extended the date of submission of these forms till 30th of June 2022. Already the notification is out, and it is available on the site of the government if somebody wants to go through this. Now there are some changes in RIPS also, but we are waiting for the notifications to come. A new RIPS, as I told you earlier, has announced in the name of RIPS 2022, right? So that has also been introduced. Let us wait and see that when the notification come, and then only we'll see that in how much sense or किस तरीके से ये 2019 जो इसकी RIPS थी उससे बेटर है. So that is the bird's eye view what has happened. Now these two provisions, what I will be discussing in these two slides are very important.
One is the amendment in section 174. There is a section subsection 2 capital B within packet is inserted, and by virtue of insertion of that particular section, what government have done, they have given the powers of reopening and rectification along with the waiver to the government, right, under GST Act itself. Why they have done this, we will discuss it later. But first we see that what these provisions are saying. This is what they have mentioned in, मैं आपको केवल एक क्रक्स बता रहा हूँ, आप जब उसको पढ़ेंगे फाइन लाइंस को, you will realize that how these sections are drafted. इसमें इन सेक्शंस का क्रक्स ये है कि अगर आप रेक्टिफाई कोई डिमांड कराना चाहते हैं तो आप जो असेसिंग अथॉरिटी है वो सुओ मोटो है, एप्लीकेशन पे भी उसको रेक्टिफाई कर सकती है। उसके लिए उनको टाइम दिया है कि साहब आप जो एप्लीकेशन मिल जाए आपको, उसके मिलने के 90 दिन के अंदर अंदर आप उनको डिसाइड करो। दैट इज वेरी गुड मूव। हालांकि ये पहले भी उन्होंने चेंज में कहा था, किस हद तक ये इम्प्लीमेंट होता है दैट इज अनदर इशू, and those particular things have been very vehemently yesterday we put forth also before the commissioner commercial taxes, and he was very much inclined कि नहीं इस बार हम time based काम ही करेंगे, so that's a good thing. So that 90 days limit is put in there through the section itself. और अच्छी चीज ये है कि अगर वो 90 दिन में नहीं करते हैं तो वो डीम टू बी रेक्टिफाइड मानी जाएगी। बट द प्रॉब्लम इज, देखिए ये एक्ट में जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो दूर को देख के सोचे जाते हैं। अब फर्स्ट थिंग दिमाग में ये आती है जब हम इसको एमनेस्टी से रिलेट करते हैं कि साहब हमने एप्लीकेशन लगाई और 90 दिन में करेंगे तो हमारी एमनेस्टी का फेज निकल जाएगा। सो दिस फैक्ट वाज आल्सो पुट फोर्थ बिफोर देम, और ये कहा गया कि साहब अगर कोई एमनेस्टी में आ रहा है, वो ये कह रहा है कि साहब मैं आ रहा हूँ तो आप उसका प्रायोरिटी पे डिसीजन कीजिए। Whatever you have to decide, pass your order, rectification of whatever, even for that matter, the reopening, आप उसको 90 दिन के अंदर फाइल करें। But one thing which is not common in these two subsections, I will tell you later once we go through the second part of it related to reopening. इसमें आपको असेसिंग अथॉरिटी के पास बिल्कुल सेम सेक्शन है जो पिछली बार 34(3) ऐड किया था। उसमें असेसिंग अथॉरिटी या तो सुओ मोटो या आपकी एप्लीकेशन पे उस केस को रीओपन कर सकता है। एप्लीकेशन वही आपको मैन्युअली लगानी है और एक फ्रेश ऑर्डर पास करेगा 90 दिन के अंदर ना। ऊपर अगर आप 90 दिन देखेंगे तो उसमें कम्युनिकेशन एप्लीकेशन से है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 90 डेज का जो पैरामीटर है वो ओपन है। नाउ द प्रॉब्लम कम्स कि आप उसको यही क्यों नहीं कह देते कि जब आप 9 या देखो क्या है कि आप रीओपन करोगे तो उसका एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा। नाउ शुड दीज 90 डेज बी ट्रीटेड फ्रॉम the passing of order or application लगाने से काम हो जाए। So this is one point which needs to be addressed and it is well communicated to the department. Another important power which the government have seek is the writing of the demand. जो 52 में जो उन्होंने उधर चेंज किया उसको डिमांड जो कमिश्नर उसको प्रेस्क्राइब करेगा कि साहब इन चीजों में हम कोई प्रॉपर्टी या कोई अटैचमेंट नहीं है, देन वी कैन वाइप ऑफ द डिमांड। जो मैं आपसे शुरू में मैंने बोला तो वो कमिश्नर के पास प्रिस्क्रिप्शन है एज ही डिस्क्राइब्स व्हाटएवर द पैरामीटर्स SOPs discussed yesterday, and that I think the SOPs will come soon, that when and in what circumstances this action can be taken. Now, two things are important here. One is power has been given. The notification will follow. First thing. Second, why the amendment is made in section 174 or the RGST Act, and why not they have made the amendment in section 33 and 34 of the VAT Act. जो मुझे समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि, और आप उसको देखेंगे बजट में एक वैलिडेशन का भी क्लॉज है. when you see that objects of these statement of objects, then you'll realize कि वहां पे एक वैलिडेशन का क्लॉज भी डाला है कि अगर फाइनेंस एक्ट 21 के सेक्शन 9 और 10 में कोई ऑर्डर्स पास कर दिए गए जो रिलेट थे 33(4) और 34 सबसेक्शन 3 से, जो पिछली बार अमेंड हुआ था. So what will happen in those cases if they have passed any order, तो वो इनवैलिडेट नहीं होंगे. वो ऑर्डर वैलिडेशन के लिए एक अलग से क्लॉज फाइनेंस बिल में डाला है.
So that is important. Now coming back, why this change has been done in the GST law. देखिए अगर पिछले एक्ट में चेंज करते हैं जो 5-7 चीजें वहां 5 चीजें अभी वहां पड़ी हुई है उन पे भी इम्पैक्ट करता है. एंड I think it is like why to go back again and again and amend the original law instead of doing that for both the reasons. Let us have the power in this particular act only related to the repealed act, so that it doesn't have you don't need to go to the earlier law time and again. So this power has been taken in this particular law itself. Now this is section 52, what I was talking about the limits. Now आप देखेंगे वेवर के लिए जो ACTO की 10,000 की पावर थी उसको 1 लाख रुपए की पावर कर दी गई है. अगर कोई डिमांड जो SOP के हिसाब से उसको लग रहा है कि रिकवरेबल नहीं है तो मैं इसको वेव ऑफ कर सकता हूं, तो 1 लाख रुपए तक की डिमांड को वेव ऑफ कर सकता है जो पहले 10,000 थी. एक जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसके लिए पहले डिमांड 25,000 रुपए की थी, उसको इन्होंने बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया. DC को 1 लाख से 25 लाख और कमिश्नर को जो 10 लाख थी उस पावर को बढ़ा के 5 करोड़ रुपए कर दिया. So these are very big changes. The powers have been given to the assessing authorities that if they feel that demands cannot be recovered, then they can wipe it off, right? Chaliye. Now let us start with what amnesty scheme is all about this time. The amnesty scheme 2022, you'll see that I have written the notification number also because 103 और 104 दो स्कीम्स है जो मैंने पहले आपसे डिस्कस करी थी. 103 उन गुड्स से रिलेटेड है जो गुड्स GST में सब्स्यूम हो गए हैं. ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो चुकी है और ये चलेगी आपके 31 अगस्त तक. टाइम कम है, करीब 5.5-6 महीने का टाइम है. तो इसमें आपको अच्छे से इसका उपयोग करते हुए और इस स्कीम को आगे बढ़ाना है. आप अपने क्लाइंट्स को भी अच्छे से इस स्कीम के बारे में एजुकेट कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जब आप देखेंगे इसके बेनिफिट्स, इससे बेटर स्कीम कभी आ सकती थी. पिछली बार ये स्कीम बहुत अच्छी थी, बट ये ड्रीम स्कीम है. इससे बढ़िया स्कीम मुझे लगता नहीं है कि कोई आएगी. और या तो फिर यही कह देंगे भाई सब कुछ ही भूल के बैठ जाओ, दैट्स अ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. बट एक रैशनलिटी में अगर आप इसको देखें तो इससे बेटर स्कीम आपको मिलेगी नहीं. This is what I can see with my experience of 20 years now. Now it is a wide, इसका कवरेज बड़ा वाइड है. सारे कमर्शियल लॉज जो भी थे वो इसके अंदर कवर हैं, बट एंट्री 54 जो मैंने आपसे डिस्कस करी, चूंकि उसके लिए एक सेपरेट स्कीम है, इसलिए वो स्कीम उन गुड्स को इस स्कीम से बाहर रखा गया. ना अपन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं. एक्ट्स में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसमें सारे एक्ट आपके राजस्थान स्टेट सेल टैक्स के दोनों एक्ट 54-94 का, CST 66 वैल्यू एडेड टैक्स, दोनों एंट्री टैक्स के, चाहे वो गुड्स का हो चाहे व्हीकल्स का हो, वो इसके अंदर आ गया है. और दोनों लग्जरी टैक्स इसके अंदर आ गए हैं, टोबैको वाला और होटल्स वाला, और एंटरटेनमेंट टैक्स. ये सारे कानून इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड कर लिए हैं. सो डिमांड्स व्हाटसोएवर रिलेटेड टू दीज एक्ट्स are falling under this scheme, right? Now this is important, that what is the admitted tax. Admitted tax वो है जो आपने किसी भी तरीके से सरकार को कम्युनिकेट कर दिया, या तो आपने रिटर्न्स में दे दिया, और या आपने किसी लिखित में किसी जवाब में दे दिया, शो कॉज के जवाब में दे दिया, या अपनी एप्लीकेशन में दे दिया. आपने अगर गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर दिया कि ये मेरा टैक्स है, मैं मान रहा हूँ, then that will become your admitted tax and there is no taking back from it. Dealer, I will not take much time. Differential tax we all know कि जो अगर कुछ concessional है या classification के matters हैं तो उसमें difference tax जो आपने admit किया है और जो department सोच रहा है, या जो आपने दिया है और forms नहीं आने का implication से जो है, that is called the differential tax. Now, one good thing is that tax includes, although it was there in 2021 scheme also, but they have taken this in this particular scheme also. कि कोई भी कंपोजिशन का कोई टैक्स है या एग्जामिशन किसी चीज की आपको है, या कोई लमसम इन न्यू ऑफ टैक्स, मतलब जो कंपोजिशन 5(1) की थी, वो अगर कोई कंपोजिशन है तो वो सारी इसके अंदर उन्होंने कवर कर ली है. ये मैं इसमें दिमाग ज्यादा लगाऊंगा नहीं आपका. ये 3 फेजेस हैं. फर्स्ट फेज इज द बिगेस्ट, दैट विल एंड ऑन
30th of June. Then you will be given one month's time, 1st July to 31st of July, and then 1st October to 31st of October. So these 3 phases जो पुरानी स्कीम में भी थे, सेम phases उन्होंने यहाँ पे डाले हैं, 3 phases इसको डाला है. हाँ, टाइम आपकी बार आपको थोड़ा कम है, बट अंडरस्टैंडेबली वो चूंकि वो चाह रहे हैं कि इसको जल्दी से हम खत्म करें, तो टाइम इज गिवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड. बट आई थिंक चूंकि हमने एक्सरसाइज पूरी कर चुके थे हम पिछली स्कीम के लिए, सो अब हम तैयार हैं कि ये we can file the pending applications in this time frame also. Now let us see what are the benefits of this scheme, right? Firstly, I will discuss that the outstanding demands related to declaration forms. पिछली बार जो था उससे कई गुना आगे बढ़ के इन्होंने इसमें आपको छूट दी है. Now, it has been observed in many cases that during this restructuring process or any other reason, when the files were in the process of transfer, तो कई जगह क्या हुआ कि पेपर निकल के इधर उधर हो गए, या आपके पूरी की पूरी फाइल ही मिसप्लेस हो गई या थ्रैश कर दी, जो भी कारण हुआ, whatsoever, the papers which we have filed to the department, those are not recoverable at their place. So what the government has said, उन्होंने बड़ा अच्छे से ये कहा कि आप हमारे को या तो प्रूफ दे दो. देखिए इसमें 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अंडरटेकिंग और एक डिटेल्स ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म्स. आपको एक अंडरटेकिंग देनी है कि उसका जो फॉर्मेट है कि भाई मैंने ये फॉर्म्स आपको दिए थे, अगर ये इंडेमनिटी सॉर्ट ऑफ अंडरटेकिंग यू विल हैव टू गिव, और उसमें डिटेल्स डिक्लेरेशन फॉर्म की भी आपको देनी है. So these 2 things need to be given there, and we should understand this. Now what happened that now you have submitted the forms with the department and they have misplaced. Now they are saying that even if you have the proof, the पावती जो हमको मिलती थी वहां पे एक सिग्नेचर करके वो दे देते थे, वो भी अगर आप दिखा देते हो तो ये माना जाएगा कि ये सफिशिएंट है, हमने ये पैसे आपके जमा करा दिए, ये फॉर्म्स आपके डिपार्टमेंट में हमने जमा करा दिए, and on that basis you can claim the benefit, entire interest, tax, penalty, whatsoever it is there if the penalty has levied. क्योंकि लगती नहीं है डिक्लेरेशन फॉर्म से पेनल्टी, बट कई जगह लोग लगा भी देते हैं, तो अगर वो पेनल्टी भी है, कोई लेट फीस भी है, कुछ भी है उससे रिलेटेड, देन एवरीथिंग विल बी वाइप्ड ऑफ, आपको कुछ भी जमा कराने की जरूरत नहीं. दूसरा, अगर आपसे ओरिजिनल फॉर्म मान लीजिए गुम गया है डिपार्टमेंट से, so in that case if you provide the counterfoil also कि साहब मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, उसका डुप्लीकेट कॉपी मेरे पास है, आप वो भी दे दीजिए, उससे भी डिपार्टमेंट उस चीज को मानेगा और आगे बढ़ेगा in disposing of the demands, right? और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो any other proof, अगर आपके इंटरस्टेट गुड्स का कोई मूवमेंट हुआ है और उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट देते हैं कि ये मेरे डॉक्यूमेंट आप देखिए, ये गुड्स मेरी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गई है, इंटर स्टेट का मूवमेंट है, ऑब्वियसली बिकॉज फॉर दैट ओनली द डिक्लेरेशन फॉर्म्स आर देयर, वन स्टेट टू अनदर और द एक्सपोर्ट फॉर दैट मैटर. तो उसमें अगर आप प्रूफ दे देते हैं, मान लीजिए एक्सपोर्ट किया है तो उसके कस्टम क्लियरेंस और वो सब चीजें अगर आप दे देते हैं, देन वो एक सफिशिएंट चीज मानी जाएगी. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन उठता है जो कई लोगों ने पूछा भी कि साहब इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड हो सकती है. देखिए, लेट मी टेल यू दैट एवरीवन नोज दैट यू नो इन इनकम टैक्स वी आर गिविंग द बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम आवर पार्टीज. So in this case also that would be, I think that would be a good and rather the best document to give. If you do not have anything, then get the confirmation from your respective buyer. He will provide you. Or you have the banking channel of transactions, then that particular bank statement may be given. कि बिल उसके दे सकते हैं आप कि मैंने उस यहाँ से बिल किया है, वहां माल गया है, उसका रिसीट की GR कोई आपके पास हो, LR हो, लॉरी रिसीट हो, वो सब चीजें आप उसमें दे सकते हैं. So this is subjective, but I think that some illustrative work will be done through SOPs in this particular Roman 3 point. So in though all these 3 things, even if you have done any of these 3 and you have submitted with the department, then in that case the entire amount of tax, interest, penalty, late fees and the accrued interest till date, everything will be waived and you can come out clean with that. I think
डिक्लेरेशन फॉर्म में इससे बढ़िया चीज आपको नहीं मिल सकती थी. You even if in your far of your dreams you wouldn't have dreamt that कि इससे बढ़िया चीज हमको मिल सकती है. So this is very good. You should exercise all the things and you just go for it, right? जो केसेस ऊपर ए में कवर नहीं हुए हैं, अगर वो केसेस आप उसमें फॉल कर रहे हैं तो आप एक नॉमिनल 20% टैक्स का जमा कराइए और बाकी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस जो भी है, एक्रूड इंटरेस्ट, वो सब आपका फ्री हो जाएगा. देखिए फ्रेंड्स, जब मैं 20% या मिनिमम अमाउंट बोलता हूँ तो दैट रिलेट्स टू दी फर्स्ट फेज. ऑटोमेटिकली 5% उसमें बढ़ता हुआ आगे जाएगा, बिकॉज अपन बार बार उस चीज को दोहराएंगे नहीं कि वो फेज 2 में ये होगा, फेज 3 में वो होगा. सो डिक्लेरेशन फॉर्म्स में आपके पास 2 पॉइंट हैं. पहला पॉइंट है, अगर आपके पास कोई पावती है जो आपने सबमिशन दे रखा है उसकी. दूसरा, अगर आपके पास कोई उसका काउंटर फॉइल है तो आप वो दे दीजिए. तीसरा, अगर एनी अदर डॉक्यूमेंट आप बता सकते हैं कि मैंने ये माल राजस्थान से बाहर इंटर स्टेट मूवमेंट में ट्रांसफर किया है, then in those cases there will be no levy on that. Everything including tax, everything will be wiped off and you will be a free bird after that. But if you do not have anything, what I told you just a few minutes back, then in that case you have to deposit some amount of tax, that is 20%, and you can get the benefit of the entire remaining tax, interest and penalty, right? So I think this is very good formation of scheme and we should go for it, right? Now the second point is very vast and very large and very elaborately discussed and very, एक बड़ा ही एक फ्री तरीके से इन्होंने इस चीज को डिस्कस किया है, जिसमें इन्होंने एवेजन भी ले लिया, लिटिगेशन भी ले लिया. Let us go one by one. So first what they have included is related to rate of tax, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन का मैटर इन्होंने इसमें लिया है. तो दिस इज अ वास्ट टर्म. आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम सब जानते हैं गुड्स का क्लासिफिकेशन कोई 12% में जानी थी, 14 में जानी थी या 5 में रहनी थी, वॉट एवर इट इज, वो सारे इसके अंदर इसके अंदर फॉल करेंगे. कोई रेट ऑफ टैक्स का मैटर है वो इसके अंदर डिस्कस करेगा, फॉल करेगा. एंड थर्डली द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है. दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म. But since it is given in this particular para, then we will have to see. If you have any of these three, then you will fall here. And the benefit is that you just have to pay 40% of the tax, of the disputed tax rather, right? और इसका कैसे फायदा है मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा. पहले अपन एक साथ ही पढ़ लेते हैं. Now the second thing is कि अगर आप पिछली बार ये रह गया था कि आप ITC अगर आपने देखा हो तो ये फर्स्ट उसमें फॉल कर रही कि अगर आपकी आईटी से रिलेटेड कोई डिमांड है तो रेजुलरी कॉज 1 था पिछली स्कीम में 2021 में, और उसमें आपको 90% देना पड़ रहा था. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई आईटी से रिलेटेड टू सेल मिसमैच या कोई आईटीसी मिसमैच था, रॉन्गली अवेल्ड आईटीसी कर ली, राइट, उस केस के अंदर आप 40% जमा कराओ, आप पूरे से छुटकारा पाओ. बट एक्सेप्शन है नंबर 3 कि वो आईटीसी बोगस बिलों से नहीं होनी चाहिए या कोई जो कंसीलमेंट हुआ है उससे रिलेटेड वो आईटीसी नहीं होनी चाहिए. एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि वो उसको देने के मूड में भी नहीं. सो वी शुड नॉट गो इन दैट. अगर आपकी जेन्युइनली कोई मिसमैच है जो रिटर्न डिफॉल्टर से रिलेटेड नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारी मिसमैचेस हैं, वो मिसमैचेस आप 40% पैसा देके आराम से छुटकारा पा सकते हैं. बाकी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और आपके अक्रूड इंटरेस्ट, तो इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा. नाउ यहाँ पे एक चीज मैं आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे वर्ड बार बार एडमिटेड टैक्स लिखा हुआ है. नाउ व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स, इफ यू हैव रिसीव्ड एनी ऑर्डर and in which the demand has been created by the department, in that case if you do not put that in dispute by filing an appeal, then that how it will be treated, क्योंकि वो हमारा admitted tax नहीं है. Once you have disputed this, then it becomes a disputed tax whatsoever. So वो फायदा अब इस disputed tax के अंदर आपको मिलेगा. So अपील जिन्होंने फाइल कर रखी है उनके लिए अच्छा है कि वो एडमिटेड टैक्स का 40% जमा कराएं, अदरवाइज तो 100% देना पड़ता है एडमिटेड टैक्स का, और डिस्प्यूटेड टैक्स का आप 40% देके छूट सकते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन. इवेजन केसेस भी इसके अंदर इंक्लूड कर गए हैं. वो इवेजन केसेस इंक्लूडेड नहीं है
जो कंसीलमेंट से रिलेटेड है। अगर आपने गुड्स को एंटर नहीं किया है तो वो इवेजन के केस इसके अंदर कवर नहीं है, एक्सेप्ट दैट ऑल इवेजन केसेस आर कवर्ड। एंट्री टैक्स की जहां तक बात है, पिछली स्कीम में ये डिस्प्यूट था कि केवल कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वही इसके अंदर इंक्लूड होगी या सारे एंट्री टैक्स रिलेटेड मैटर्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि केवल वो आइटम इसमें इंक्लूड नहीं होंगे जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज्ड नहीं। If you have not disclosed the goods liable to entry tax in the books of accounts, then you cannot avail for this benefit, and except that all the demands related to entry tax would be eligible for this particular clause 2. Now motor vehicle entertainment tax, दोनों तरीके के लग्जरी टैक्स, ये चारों भी इसमें दी गई है। लास्ट के जो 9th पॉइंट है दैट इज इंपॉर्टेंट, उसमें ये लिख रहे हैं कि फॉर विच SCN अपील पेंडिंग और रिमेनिंग केसेस जो भी है, रिमांड केस जो है वो इसके अंदर फॉल करेंगे। नाउ प्रॉब्लम क्या हुई फ्रेंड्स, डिस्कशन में ये चीज आई कि अगर मैंने कोई ITC से रिलेटेड मैटर है, जो फोर्स्ड ITC का मैटर है, और उस मैटर को अगर मैंने अपील में डिस्प्यूट कर दिया, so will that fall in this particular clause 2(9) or that will go in clause 3? My humble view is, since that particular thing is already in table in item number Roman 2, already they have said कि ये except 3 के ITC fall करेंगी, that should not be a case which may fall here. But yes, it is a litigation prone thing and we may litigate कि भाई साहब हमने अपील इसकी फाइल कर रखी है, आप ऊपर में 3 को बार कर रहे हो, नीचे में 3 नहीं लिख रहे हो। So in that case, I can put that particular thing in dispute कि साहब हम तो इसको इसमें लेके जाना चाहते हैं। Then you know discussions में यही समझ में आया कि they are not ready to accept it, क्योंकि अगर फाइनल अगर प्रॉब्लम होती है, आप नहीं मानते हो, डिपार्टमेंट नहीं मानता है, तो आपको कमिश्नर साहब के पास ही जाना पड़ेगा। And in that case, what CCT thinks would be the final decision of this particular scheme. तो इसलिए अपने को उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा के, और मेरा ये मानना है कि अपने को उसमें ही रहना चाहिए जो ऊपर कह रहा है। चलिए, इवन उसका जो शो कॉज है वो भी उसमें आ जाएगा, और रिमांड के केसेस जो पड़े हुए हैं वो भी इस स्कीम के अंदर आप लाके डाल सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो सेकंड कैटेगरी का है वो रिलेट कर रहा है कि मेरे कोई अगर रेवेन्यू एक्ट 1890 में कोई इनिशिएशन हो चुका है रिकवरी का, या लैंड रेवेन्यू एक्ट जो राजस्थान का है उसके अंदर अगर हमने कोई रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी, तो वो प्रोसीडिंग भी आप इसके अंदर लेके आ सकते हैं। वी कैन डू इन दिस, दैट थिंग कैन बी डन हियर, राइट। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड segment of this scheme, which relates to the demand ITC through false or forged bills or concealed आपकी जो goods थी वो अगर मिल गई है। इस केस के अंदर आपको पूरा अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। बहुत अच्छा है अगर आपको मालूम है कि मेरे को मालूम है विलिंगली मैंने कुछ गड़बड़ करी है, या अनविलिंगली भी करी है, अननोइंगली मैंने कुछ कर दिया, और पीछे वाला आदमी ये कह देता है, जो कि हम GST में रोज देख रहे हैं कि साहब मैंने सप्लाई ही नहीं करी। In that case, if you know that this kind of thing is going to happen, then in that case you can deposit the entire amount of tax and relax। हो गया, पूरा टैक्स आप जमा करा दो, इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ वेव्ड है, और वो फेज 1 के लिए। अदरवाइज आपको 5% पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, या 10% एज द केस में भी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। So if you have any cases lying with you which is pending due to the bogus bill or forced bill, ITC related matters, or the concealed goods का कोई आपके unaccounted for concealed goods हैं, if you are having any case like that, then you can go and avail the benefit. I will just move quickly now because time काफी हो गया। When you talk about the fourth segment, the category, it is for more than 25 crores exclusively। जो आपकी टैक्स इंटरेस्ट की अगर डिमांड है तो आप 40% पैसा जमा कराओ, बाकी आपका
मान लिया जाएगा कि ये जमा है। फिफ्थ जो कैटेगरी है वो नई डाली है, एक डिफेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, या कोई गवर्नमेंट की एंटिटी है या गवर्नमेंट की कोई बॉडी काम कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट काम कर रहा है, उससे रिलेटेड अगर कोई डिमांड है तो वो बिना कोई पैसे दिए आपको डिमांड खत्म कर दी जाएगी। सो CSD अगर ऐसा कुछ आपके पास है जिनकी डिमांड पेंडिंग है, देन यू कैन वेरी वेल गो फॉर इट। सिक्स्थ जो कैटेगरी है वो जो कहीं कोई भी ऊपर जो नहीं आ रहा है वो इसके अंदर फॉल करेगा, और इसमें आपको 75% टैक्स का जमा कराना पड़ेगा, एंड यू कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल योर अदर लाइबिलिटीज। So this is the benefits. These are the benefits tabulated in this scheme, which I just मैंने आपसे डिस्कस किया for your better thing. Now कुछ explanations भी इस स्कीम के साथ में हैं जो पिछली स्कीम में भी थे. This is the same explanation, इसमें कोई चेंज नहीं है. अगर आपने कोई विलिंगनेस फाइल करी है और विलिंगनेस में आपको फेज 1, 2, 3 जिसमें भी आपने विलिंगनेस फाइल करी है, उस विलिंगनेस में फाइनल कम्युनिकेशन आपको डिपार्टमेंट की तरफ से आ जाता है, उसके 10 दिन के अंदर आपको इस पैसे को जमा कराना है, या फिर जो लास्ट डेट उस पर्टिकुलर फेज की है उसमें आप वो पैसा जमा कराइए, जो भी इसमें से बाद में आ रहा है उसमें आप जमा करा सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी उसी पीरियड की अप्लाई होगी जिसमें आपने विलिंगनेस फाइल करी थी। सो बट कंडीशन इज कि आप उस फेज के पहले उसको फाइल कर दें। अब इसमें एक जनरल क्वेश्चन ये माना आता है कि साहब मैंने फाइल करी 20 जून को और मेरे पास कम्युनिकेशन आया 1 जुलाई को, तो वो भी फर्स्ट फेज में ही कवर होगी, इसमें कोई वो नहीं है। इवन दिस पॉइंट वाज yesterday discussed also in the meeting and it was properly conveyed to the department and they also assured कि ये problems initial stage पे थी, फिर later on they have resolved these issues. Meaning thereby, if we have filed the willingness and that is pending on the part of the department, then we cannot be penalized because of that particular thing. We come into picture only after the final demand is being communicated to us. So this particular explanation relates to that. Now, this is also very important to know that in this particular scheme, they have given the benefit of installments also. अगर आपको कोई installment अब जैसा कि बहुत ही ज्यादा पिछले दिनों में इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम में रही, तो अगर आप एडवांस पैसा जमा नहीं कराना चाहते हैं या नहीं करा सकते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच, in that case the installments may be granted. Limit is there on the screen, you can see. but to make sure in your mind that this is the monthly installment, और वो monthly installment जब आपका कम्युनिकेशन फाइल डिपार्टमेंट से आ जाएगा उसके 10 दिन के अंदर आपको उसको इंस्टॉलमेंट की पहली किस्त जमा करानी है, और नेक्स्ट जो किस्त बनेगी वो पहली किस्त से 30 दिन के बाद बनेगी और उसकी अगली किस्तें 30 दिन के अंदर पे आपको देनी होंगी। अगर आप ये नहीं दे पाते हो तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हो। अगर आपने कोई भी स्कीम में पैसा इंस्टॉलमेंट का पैसा जमा नहीं कराया है, देन यू विल बी किक्ड आउट ऑफ दिस स्कीम। दैट इज थिंग टू बी केप्ट इन योर माइंड। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कमिश्नर को ये पावर दी है कि अगर वो ये सोचें कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड था जिस वजह से कि एप्लीकेंट पैसा जमा नहीं करा पाया, इन दैट केस कमिश्नर बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन may condone the delay and he can give an opportunity to the assessee कि आप उसको कर लें। ये एक्सप्लेनेशन सेट ऑफ के बारे में बताता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लास्ट में लाल कर रखी है वो पहले प्रॉब्लम दे रही थी, because we were of the opinion that the maximum benefit must be given to the clients. So we said that to exercise my constitutional right of appeal, if I deposit anything which is required to be deposited under section 82 subsection 3 of the VAT Act 2003, in which it categorically and specifically it says that if you do not deposit 10% of the disputed tax amount, you cannot file the appeal. So to exercise my constitutional right of appeal, if I deposit something, then that should not be treated as deposition or admitted tax thing of mine. But अब पिछली बार प्रॉब्लम्स आई तो उन्होंने इस बार इसको क्लियर ही कर दिया कि वो अमाउंट भी उसके अंदर डिपॉजिटेड में माना जाएगा, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते।
जहाँ पे डिमांड केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी से रिलेटेड है, लेट फीस से रिलेटेड है, उस केस के अंदर ये मान लिया जाएगा कि इसका टैक्स ऑलरेडी जमा है. दीज प्रोविजंस आर exactly the same what these were in the 2021 scheme. So मैं इसमें ज़्यादा डिस्कशन आपसे नहीं करूंगा. एक्सप्लेनेशन 6 भी है, वो भी सिंपल है और सेम पुराना वाला जो मैटर था उसी पे रिलेटेड है. 7 पॉइंट रिमांड से रिलेटेड है. अगर कोई आपका केस रिमांड हो गया है तो आप उसको और डिस्प्यूट में नहीं है तो भी असेसिंग अथॉरिटी उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बाध्य है. कोई SCN इशू हो गया है, वो प्रोसीडिंग्स विड्रॉ होंगी और विड्रॉ होने के बाद उस पर आप एक्शन लेके उसको खत्म कर सकते हैं. Now, as far as the procedure is concerned, it will be filed electronically. There is no manual interference as far as the scheme is the black and white what is written in the scheme is there, that there is no need to manually interact. But how it goes, we all know. चलिए, एक सेपरेट विलिंगनेस आपको हर डिफरेंट एक्ट या अथॉरिटी को देनी पड़ेगी. फाइनल डिमांड आपको दे देंगे और डिटेल प्रोसीजर कमिश्नर साहब उसको बताएंगे कि भाई क्या डिटेल प्रोसीजर होगा. इट इज नॉट येट आउट, बट आई थिंक दैट since the more or less the scheme is just like, and the explanations are also flowing along with the procedures like 2021 scheme. So I think that the procedures which were related in to 2021 scheme identical उसमें भी आ सकते हैं. So we should go through those procedures and we should start doing it because already 3-4 days have gone for the first phase. तो हम उनको लेके आगे बढ़ सकते हैं. जहां तक केसेस, पुराने केसेस का सवाल है जो इनसे रिलेटेड थे, उसमें 2 चीजें देखने की है. पहला है कि अगर आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट करा दिया है तो उस अमाउंट को ये इस स्कीम के अंदर पूरा अगर अमाउंट डिपॉजिटेड है, then the assessing authority is compelled to issue AS2 first on priority that would be issued अगर आपने कोई पेमेंट पुराने उसमें स्कीम में करा दिया. सेकंड थिंग इज कि अगर आपने पुरानी स्कीम में कुछ पैसा जमा नहीं कराया या पार्शियली जमा कराया, तो ये सहूलियत आपको दी गई है कि वो जो आपकी स्कीम में आपने पैसा जमा करा दिया, आप 2022 की स्कीम में ये माना जाएगा कि आपने फर्स्ट फेज में ही विलिंगनेस लगा दी. सो वॉट एवर द बेनिफिट्स आर देयर इन द स्कीम, though as per schedule as for phase 1 will be given to you. So that is one thing which is there. ये बाकी 2 चीज आपको रिफंड मिलेगा नहीं. उसका 104 नंबर का जो नोटिफिकेशन है जो रिलेटेड है उन गुड्स से जो गुड्स GST में सब्स्यूम नहीं हुई है, वो 5 चीजें मैंने आपसे पहले डिस्कस करी थी. पेट्रोल, डीजल, HSD, then your ATF, the liquor and the gases, natural gas. ये आपके सामने है. इसमें लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक्ट केवल 4 कवर हैं, RST एक्ट 54 और 94 का, प्लस वैट एंड CST 56, वैट 2003. These 4 acts they have included in this particular scheme. अगर इन 4 में आपकी कोई डिमांड है तो आप इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं. Now this is phase 1, demand related to evasion of tax. अगर आपकी डिमांड कोई इवेजन ऑफ टैक्स से रिलेटेड है और वो 31/3/17 से पहले की है, 31/3/17 से पहले अगर आपकी कोई डिमांड क्रिएट हो चुकी है तो उन डिमांड्स में आप पूरा अमाउंट टैक्स का जमा कराएं फर्स्ट फेज में, प्लस फिर उसके बाद में 5% पेनल्टी, 10% पेनल्टी एज द केस में भी आपको जमा कराना पड़ेगा टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम. राइट, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन के लिए है नहीं. इट इज again and again I am telling you that this is very good scheme, even if it is related to evasion. आप केवल टैक्स देके छूट रहे हैं, जो पिछली बार पेनल्टी का भी आपको 40% तक जमा कराना पड़ रहा था. Now the second phase, the second what you say the second category, it is just डेट की चेंज है कि आपको डेट अगर आपने 1/4/2017 से और 31/3/22 तक, अगर आप 31/1/22 तक, जो अब 31/3/22 के लिए हमने रिप्रेजेंट किया है कि आप 31/3/22 तक के केसेस को कवर कर लें, तो उन केसेस के लिए हैं, उसमें आपको टैक्स जमा कराना है, प्लस उसके साथ 20% इंटरेस्ट का और 20% पेनल्टी का आप जमा करा दें, तो उन केसेस से आपको निजात मिल सकती है. बाकी जो भी है आपका इंटरेस्ट पेनल्टी वो आपको माफ कर दिया जाएगा.
डिक्लेरेशन फॉर्म्स की जहां तक बात है, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल कैटेगरी इन्होंने जो अपन ने 1 में डिस्कस करी थी 103 नोटिफिकेशन के, सेम इसके अंदर उन्होंने डाला है, तो मैं उसको आपसे दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा. This is one thing which is very good as far as the declaration forms is concerned. You can avail the benefit of this scheme. Now the category 4 is related to the demands जो कि 3 नंबर 1 या 3 नंबर जो इवेजन है और जो डिक्लेरेशन फॉर्म से रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड कोई डिमांड नहीं है जो 31/3/17 से पहले आपने क्रिएट कर दी थी. उस केस के अंदर आपको 90% टैक्स का जमा कराना है, जो 5% बढ़ता जाएगा, बाकी आपकी जो भी डिमांड है उसको खत्म कर दिया जाएगा. नाउ जो 5वीं कैटेगरी है वो डेट को आगे बढ़ा रही है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है. जो डेट आगे बढ़ गई है 31/3/17 के बाद से लेके 31/1/22 तक की जो डिमांड्स हैं उन डिमांड से रिलेटेड है, और उन डिमांड्स में केवल डिक्लेरेशन फॉर्म और इवेजन वाले मैटर उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए. इन दैट केस you will get the benefit if you deposit 100% of the tax plus 10% interest if you do not go in the first phase. So that is one thing which needs to be considered. And इसके explanations में escape कर रहा हूँ क्योंकि same explanation है जो 103 notification में लगाए हुए थे, same explanation इसमें भी हैं. जो notification में वहां काम आ रहे थे subject to those explanations, वो यहाँ भी काम आ रहे हैं. Identical notifications issued हैं. Miscellaneous announcements की जहां तक बात है तो रिप्स की एक 2022 की स्कीम मैंने आपसे बताया था कि एक डिस्कशन हुआ है और वो स्कीम बन रही है, वो जल्दी आपके सामने आ जाएगी. सेकंड जो अमेंडमेंट है कुछ रिप्स जो 2010, 14 और 19 की थी, 10 और 14 का ऑपरेटिव पीरियड खत्म हो चुका था. सो नाउ दे हैव ड्यू टू द कोविड प्रॉब्लम्स they have considered that and now they have given extension of 1 further year to these 3 exemption schemes. Date of declaration forms की मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. एमनेस्टी स्कीम मोटर व्हीकल और कुछ स्टाम्प ड्यूटी के लिए आई हैं जो काफी अच्छी हैं. वो एमनेस्टी स्कीम्स इफेक्टिव तुरंत प्रभाव से हो चुकी है और उसका भी फायदा अपन लोग ले सकते हैं. एक प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे थे रिप्स में, उसके लिए खैर वो नोटिफिकेशन आएगा तो पता लगेगा, बट द थिंग इज कि अगर आप रिप्स में काम कर रहे हैं, आपको ध्यान हो, मैं आपके बेनिफिट के लिए बता देता हूँ कि 2016 में 16 तक जो स्कीम 2010 और 14 तक थी, उनमें जो सिक यूनिट्स होती थी उसमें BIFR और सीका करके एक सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट हुआ करता था. वो 2016 में बोर्ड भी जो बाइफर था वो भी और सीका भी दोनों रिपील हो गए. As a result of which the NCLT come into picture in December 16. So जो केसेस BIFR या जो सीका एक्ट के तहत हो जाते थे उनको सरकार बेनिफिट देती थी रिप्स में, बट आई डोंट नो 2019 क्या ये उनके दिमाग से स्लिप हुआ या क्या हुआ, बट दी NCLT से जो एक्विजिशंस हैं या किसी कोर्ट से जो एक्विजिशंस हैं उनको जो एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसमें इन्होंने इंक्लूड नहीं किया. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग मिसिंग एंड आई होप एंड विश कि वो चीज भी इसके अंदर जल्दी से जल्दी इंक्लूड हो जाए. जहां तक MLU-PY का सवाल है, एक वन टाइम रिलीफ की मैंने आपसे बात करी थी, वो एंटरप्रेन्योर्स को देने के लिए एक प्रपोजल है एंड दैट विल बी ऑन फ्लोर वेरी सून. Now, some of the provisions related to Edge Stamp Act, I will just go through and then we will take the question answers if there are any. See, land conversion की जो rates है tourism के लिए, जैसा मैंने आपसे बताया कि इंडस्ट्री जब उनको दर्जा दे दिया गया तो उसके बेसिस पे वो स्टाम्प ड्यूटी और सब चीजें उसी हिसाब से चार्ज होगी. जो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की रिलीज डीड थी उसकी भी ड्यूटी को 500 रुपए कर दिया है. नाउ जो 50 करोड़ या ऊपर से कन्वेंस डीड हैं उनसे ऊपर की, उनकी ड्यूटी को रेमिट किया गया है. दिस इज वन गुड थिंग. एक हेरिटेज ये अपन छोड़ सकते हैं, हेरिटेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज थी नहीं. नाउ वी कैन लीव दीज आल्सो, बट दिस इज इम्पोर्टेंट.
जो LLP और इनके कन्वर्जन से इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे लगता था स्टाम्प ड्यूटी का, वो बाहर बड़ा ज्यादा होता था। तो इन्होंने उसको कंपनीज के पैरिटी पे लाके LLP, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप से कन्वर्जन या वाइस वर्सा जो भी है, उन पे 50 पैसे पेनल्टी स्टाम्प ड्यूटी लगाई है, और उसके रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रुपए की एक्सेस में जो है वो आपको रेमिट कर दी जाएगी। दिस इज अ गुड मूव, एंड हम लोगों के रोज में काम में आने वाली चीज मुझे लगता है कि थी। Now this is one disputed point which was communicated to the government also. इसमें एक रिप्स के अंदर जो किसी आदमी ने अगर एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट ले रखा है, तो रिप्स में ये प्रोविजन है कि आप जो आपका स्टाम्प ड्यूटी का कन्वर्जन और है या स्टाम्प ड्यूटी है जो परचेज पे लग रही है, उसको 100% वेवर मिल रहा था। नाउ इनका अमेंडमेंट ये इन्होंने किया है कि आप 75% तो अपफ्रंट ले लें छूट, और 25% का हम आपको रिएम्बर्समेंट करेंगे एट अ लेटर स्टेज। सो नाउ द कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ कि इन्होंने इसको प्रपोज तो कर दिया कि 75% स्टाम्प ड्यूटी पे देंगे, पर प्रॉब्लम हो गई वहां पे स्कीम में, वहां पे 100% ही लिखा हुआ है। सो दैट इज वन थिंग विच इज creating some problem in there. So this thing has been put in the in the notice of the government that these two things are going contradictory to each other. और इसको अगर आप देखें तो लगता है कि इससे इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा एक लगेगा कि जब कोई चीज एट वंस 100% मिल रही थी, अब आप उसको डेफर करेंगे। आई थिंक ज्यादा तो नहीं, हाँ ठीक है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बट दे विल गेट द एंटायर बेनिफिट, देयर इज नो डाउट इन दैट। सो these particular things were there in the stamp duty, and that's all as far as my presentation is concerned. And I thank you all for giving me the patient hearing, and I open the house for the question answer session with the permission of the organizers. Back to you, Tarun. Thank you so much, Yashasvi sir. That was a very detailed presentation covering every aspect about the government aspects of their sources of revenue and where they want to expand. और जैसे सर आपने बताया कि it's a visionary budget by our honorable CM that does not impact just 1 year, but I think it will impact the next upcoming 5 to 10 years, and you have deliberated why it will impact the next 5 to 10 years. Taxation proposals also the most awaited and the best amnesty scheme till date for both types of taxes, whether it has been under the VAT Act or whether which are not subsumed in the GST as of now. And the thrust of the government on various infrastructure things also, like the blockchain thing you have mentioned, that there will be blockchain center of excellence. Now the Rajasthan rural tourism scheme. So we think that the budget is about all around development, and let's see how the government agencies work on to bring all these things to the reality. So with that, I actually open the floor for people. If you have any questions, maybe I've given the right to everyone to unmute themselves and ask the question you have. So I think, sir, everybody is getting ready to go into the amnesty scheme. That's the beauty of webinars. You just let us have to go with the amnesty scheme. And not the beauty of webinar, Yashasvi sir, it is the beauty of the speaker. He has delivered the session in such a way that there is no question and query. Thank you, sir. Thank you. Exactly. The way you have deliberated and provided, sir, is amazing, literally. And with that, I actually want to invite CA Pankaj Jain ji from Udaipur Tax Bar Association to provide a vote of thanks to the speaker and our participations. So over to you, Shri Pankaj Jain from Udaipur. Thank you very much, Tarun ji. Respected Satish Gupta sir, आज के हमारे eminent speaker गुप्ता जी, अग्रवाल जी और शर्मा जी जयपुर से। अभी जो डिस्कस हो रहा था क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए,
सर जो ब्रिलियंट सेशन आपका रहा है, आप अगर चैट बॉक्स भी ओपन करें तो उसमें जो एप्रिसिएशन वर्ड्स ऑलरेडी मेंबर्स ने भेज दिए हैं, तो क्वेश्चन जिस तरीके से आपने डिफाइन किया आज इस एमनेस्टी स्कीम को, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। और मैं पिछले 1 घंटे से कंटिन्यू इस सेशन को जब मैं देख रहा था तो मुझे खुद भी ये रिलीफ मिला कि चलो एमनेस्टी स्कीम से जो मुझे चीज चाहिए थी वो मुझे आज मिल गई, कि जो मुझे समझना था और सारी चीज जो आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाई। सारे मेंबर्स के जो एप्रिसिएशन वर्ड्स हैं वो चैट बॉक्स में कुछ ने तो मैसेज कर दिया है कि बहुत अच्छा और सुपर सेशन आपका रहा है। और ये सही भी रहा कि आज सर आपने जिस तरीके से इस सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है सभी मेंबर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल था। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सभी स्पीकर्स का। टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन जयपुर, RTCA, राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन, गुप्ता सर, और जो भी मेंबर्स आज यहाँ पर इस सेशन में जुड़े हैं उन सब ने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसा कि हमारे सुबह सुधीर मेहता जी ने एक रिक्वेस्ट करी थी गुप्ता सर आपसे कि इस तरीके के जो सेशंस हैं वो कंटिन्यू आगे बढ़ते रहें, जिससे इस फ्रेटर्निटी में एजुकेशन से रिलेटेड और कंटिन्यूअस एक प्रोग्राम ये एजुकेशन से रिलेटेड चलते रहे। ऐसी रिक्वेस्ट मैं भी आपसे करना चाहूंगा। और मैं एक बार बीच में रोकूंगा आपको पंकज जी, जी, देयर इज वन जी। क्वेरी आई कैन सी इन द चैट जी बॉक्स। जी इट बिल्कुल सर, सेज दैट बिल्कुल will सर। the return defaulter cases is covered in entry number 2. So this particular point I specifically covered in my deliberation, that department is no mood to give any benefit to those purchasers जिनके जो सेलर्स हैं उन्होंने डिफॉल्ट किया है, and they are very clear on that we have not received any tax whatsoever in the state exchequer. We will not provide any relief to them. So keep that in your mind. Please continue. ओके सर। यस तरुण जी, थैंक यू वेरी मच, आप कंटिन्यू करिए तरुण जी। Thank you so much, Pankaj sir, for your vote of thanks. It's indeed a nice deliberation on both Union Budget 2022 and the Budget of State 2022. So with that, we request the leave from all the participants. It's been amazing Saturday evening. So I just request Satish sir, if you want to give any concluding remarks and any force of guidance to all of us. Okay. So let's move forward, all right. So thank you so much, all the participants. Thank you so much, Yashasvi sir, for such an amazing deliberations. And we hope that with the help of RTCA, UTCA, and the TCA Jaipur, we will be bringing much more webinars on your topics. Please keep forwarding us the topics on which you want, that we can call up the experts to deliberate on that, so that at least we can increase the competitive power of all the professionals across Rajasthan and the country. So with this, I, Tarun Modi, thank you all for joining this webinar today in the association with RTCA, UTCA, and the TCA Jaipur. Good evening, all. Thank you so much for your time. Good evening, Yashasvi sir. Good evening. Thank you. Thank you, Yashasvi bhai. Thanks a lot. Thank you.